मेरा नाम मिथिल है, मेरी उम्र 30 साल है। 2013 में मुझे एक बीमारी का पता लगा था जिसका नाम प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिनजाइटिस है, पीएससी बोलते हैं। और इसमें लिवर के जो बाइल डक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, नैरो हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है। इसका कारण किसी भी अभी तक रिसर्च में पता नहीं चल पाया है। और इसमें इस बीमारी में जो सबसे बड़ा सिम्टम नज़र आता है वो आता है आपके शरीर में खुजली होने लगती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। ऑल ओवर बॉडी इचिंग होती है, आंखें येलो हो जाती हैं, बॉडी येलो हो जाती है और आपको भूख लगना बंद हो जाता है। इसके साथ साथ इंडाइजेशन की भी बहुत प्रॉब्लम आती है। मैंने काफ़ी हॉस्पिटल्स में इसको चेक करवाया था, लेकिन मुझे यही बताया गया कि इसका सॉल्यूशन लिवर ट्रांसप्लांट है। और लिवर ट्रांसप्लांट मानते हैं कि बहुत बड़ी सर्जरी होती है और इंडिया में तो खास तौर पर बहुत ज़्यादा ही इसका एक्सपेंस भी आता है, लेकिन ये लाइफ सेविंग भी यही है। इस बीमारी में इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन यही होता है, इसी से ही किसी की लाइफ बच सकती है। 2013 के बाद से लेके आज तक 6 सालों में जितनी बार भी इसका चेकअप करवाया, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला। टेम्परेरी सॉल्यूशन में हम इसमें स्टेंट लगा करके डॉक्टर्स इसमें ठीक कर देते हैं, लेकिन वो भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एंड सॉल्यूशन इसमें सिर्फ और सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ही होता है। At that time, I didn't even know what transplant meant. I didn't even know what dialysis and transplant is and what kind of impact it would have on my body or on my life as a whole. I did not know that. All I knew is doctors are saying I'm not well. Doctors are saying that I may not live for long. And I cannot let that happen to myself. Getting a donor or having a donor that matches is a big concern. Okay, and kidneys, as compared to other organs, is something that you can donate even while you're alive. I've been very fortunate. My father gave me his kidney. My transplant was done at the age of 33 for me. My father was very healthy, I was very healthy, and the whole battery of tests that were done for the both of us as recipient and donor just went. It's a normal thing for a woman, but for me, it was a very big deal. It was a rare thing for a woman to go through a transplant and then conceive and then have a baby. After 3 to 4 years post my transplant, finally my nephrologist gave me a go-ahead that I can conceive a child. It's a big affair in the sense that a lot of medication has to be adjusted. And it was done. And I was 38 when my son was born. I'm almost 40 now. And my son, I mean, a healthy child, conceived naturally, natural birth, everything, like a normal child. So this has been the journey and it's been beautiful. It's been nice. Finding a donor and finding a healthy donor that matches is a big challenge. And therefore, organ donation is very, very important. And I would request everybody, in fact, in my family, of course, all of us have already done that, to pledge your organs. You don't know how much, you can contribute to others' lives. Well, it was not easy to accept for a transplant. It was a shock. See, I had not heard about the heart transplant in India. I went to Chennai, registered myself. Then they found out a heart suitable for me, according to the blood group, age, and the condition of my heart and my other blood parameters. I'm not aware of the person. I'm not aware of his background. I'm not aware of his family at all. But it would be helpful if I can go to the donor family and thank to them. They have given me a second life. Thank you very much. No, because my mother's kidney, my father's kidney, my brother's kidney did not match. By God's grace, my uncle donated me a kidney, and I'm very thankful to him for doing that. I think अंगदान से बड़ा योगदान कुछ नहीं होता और उसको तभी महादान कहा जाता है। आप एक अपने जाते हुए शरीर से एक व्यक्ति अगर अंगदान करता है तो 8 लोगों की जिंदगियां बना के जा सकता है। ऑर्गन डोनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और जिसकी अभी भारत में लोगों को जिसके बारे में जानकारी नहीं है और हम ये जानकारी और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इससे कई लोगों की दुनिया जो आज डायलिसिस में है, जिनका हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है, उनकी दुनिया बदल सकती है अगर उनको उनका ऑर्गन दे दिया जाए तो। जब ये स्कूल से आती हैं और खाना खा के लेटती हैं, शी बिकम अनकॉन्शियस। और जब हमने डॉक्टर से बात किया और इनको हॉस्पिटल में ले गए तो मालूम चला कि इनकी दोनों किडनियां काम नहीं कर रही, वीक हो चुकी थी ये।
इनका जो वजन था जब बीमार नहीं हुई थी तो इट वाज 58 kg, और जब ये डायलिसिस पे थी तो शी वाज जस्ट 36 किलो। कई बार घर की सीढ़ियाँ चढ़ना भी मुश्किल हो जाता था इनके लिए। कितने उनको हम गोदी में लेके जाते थे डायलिसिस कराने के लिए। इंसान ने भी किडनी दी, डोनेट किया, शायद उससे बड़ा कोई और डोनेशन नहीं कर सकता आदमी शायद अपने जीवन में, क्योंकि उन्होंने एक तरह से नई जिंदगी दी हम सबको। I believe every person who is born in India, along with their birth certificate, they should be given a certificate to donate the organs also. Unless and until they are really suffering from some rare diseases, they should be given the right to donate their organs. If a person has the opportunity, they should definitely donate their organs. I don't believe this is an opportunity. This should be a right. This should be a duty of every citizen or every person who is getting born in India to donate the organs. Because once we are dying, we don't have any control over our organs. Have any control on our organs. We should definitely be donating and helping out those who are suffering. Correct. Going to the ashes should help somebody, not like we are taking our own body to ashes. Correct, sir. Say everyone to pledge their organs and help out those who are needy. It helps. It really helps. People like me, people like others who are suffering, they need your support. Definitely. Before going to ashes, at least pledge your organs for their support. मैं तो कहता हूँ कि हर इंसान को आगे आ करके खुद को रजिस्टर करना चाहिए, जिससे कि बाकी लोग एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी लाइफ जी सकें। I have pledged for my all organs. Even my daughter has pledged. My husband has pledged. Someday when, God forbids, I am not there, at least my organs will be there for another person to live. I consider that's the only fitting way of reaching back to the society what the donor and society as a whole has given to me. Maybe in that way I'll be able to repay back something. Attention, please. Honorable Governor Sir has left the Governor House to be here with us in SMU campus. So we are expecting him within 15 minutes. Please be patiently be seated. Thank you.
और इसमें लिवर के जो बाइल डक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, नैरो हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है। इसका कारण किसी भी अभी तक रिसर्च में पता नहीं चल पाया है। और इसमें इस बीमारी में जो सबसे बड़ा सिम्टम नजर आता है वो आता है आपके शरीर में खुजली होने लगती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, ऑल ओवर बॉडी इचिंग होती है, आंखें येलो हो जाती हैं, बॉडी येलो हो जाती है और आपको भूख लगना बंद हो जाता है। इसके साथ साथ इंडाइजेशन की भी बहुत प्रॉब्लम आती है। मैंने काफी हॉस्पिटल्स में इसको चेक करवाया था, लेकिन मुझे यही बताया गया कि इसका सोल्यूशन लिवर ट्रांसप्लांट है। और लिवर ट्रांसप्लांट मानते हैं कि बहुत बड़ी सर्जरी होती है और इंडिया में तो खास तौर पर बहुत ज़्यादा ही इसका एक्सपेंस भी आता है, लेकिन ये लाइफ सेविंग भी यही है। इस बीमारी में इसका अल्टीमेट सोल्यूशन यही होता है, इसी से ही किसी की लाइफ बच सकती है। 2013 के बाद से लेके आज तक 6 सालों में जितनी बार भी इसका चेकअप करवाया कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला। टेम्परेरी सोल्यूशन में हम इसमें स्टेंट लगा करके डॉक्टर्स इसमें ठीक कर देते हैं, लेकिन वो भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एंड सोल्यूशन इसमें सिर्फ और सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ही होता है। At that time, I didn't even know what transplant meant. I didn't know what dialysis and transplant is and what kind of impact it would have on my body or on my life as a whole. I did not know that. All I knew is doctors are saying I'm not well. Doctors are saying that I may not live for long. And I cannot let that happen to myself. Getting a donor or having a donor that matches is a big concern. Okay, and kidneys as compared to other organs is something that you can donate even while you're alive. I've been very fortunate. My father gave me his kidney. My transplant was done at the age of 33 for me. My father was very healthy, I was very healthy, and the whole battery of tests that were done for the both of us as recipient and donor just went very well. My father was 58 when he gave me his kidney, and even after that, for the last 6 years, he's been leading a normal life. I have been able to put my best foot forward. I've been able to move forward in my life and do all that is actually a very normal thing. To have a child, it's a normal thing for a woman. But for me, it was a very big deal. It was a rare thing for a woman to go through a transplant and then conceive and then have a baby. After 3 to 4 years post my transplant, finally my nephrologist gave me a go-ahead that I can conceive a child. It's a big affair in the sense that a lot of medication has to be adjusted, and it was done. And I was 38 when my son was born. I'm almost 40 now, and my son, I mean, a healthy child, conceived naturally, natural birth, everything like a normal child. So this has been the journey, and it's been beautiful. It's been nice. Finding a donor and finding a healthy donor that matches is a big challenge. And therefore, organ donation is very, very important. And I would request everybody, in fact, in my family, of course, all of us have already done that, to pledge your organs. You don't know how much, you can contribute to others' lives. Well, it was not easy to accept for a transplant. It was a shock. See, I had not heard about the heart transplant in India. I went to Chennai, registered myself. Then they found out a heart suitable for me, according to the blood group, age, and the condition of my heart and my other blood parameters. I'm not aware of the person. I'm not aware of his background. I'm not aware of his family at all. But it would be helpful if I can go to the donor family and thank to them. They have given me a second life. Thank you very much. No, because my mother's kidney, my father's kidney, my brother's kidney did not match. By God's grace, my uncle donated me a kidney, and I'm very thankful to him for doing that. I think अंगदान से बड़ा योगदान कुछ नहीं होता और उसको तभी महादान कहा जाता है। आप एक अपने जाते हुए शरीर से एक व्यक्ति अगर अंगदान करता है तो 8 लोगों की जिंदगियां बना के जा सकता है। ऑर्गन डोनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और जिसकी अभी भारत में लोगों को जिसके बारे में जानकारी नहीं है और हम ये जानकारी और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इससे कई लोगों की दुनिया जो आज डायलिसिस में है, जिनका हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है, उनकी दुनिया बदल सकती है अगर उनको उनका ऑर्गन दे दिया जाए तो। जब ये स्कूल से आती हैं और खाना खा के लेटती हैं, शी बिकम अनकॉन्शियस। और जब हमने डॉक्टर से बात किया और इनको हॉस्पिटल में ले गए तो मालूम चला कि इनकी दोनों किडनियां काम नहीं कर रही, वीक हो चुकी थी। ये इनका जो वजन था, जब बीमार नहीं हुई थी तो इट वाज 58 kg, और जब ये डायलिसिस पे थी तो शी वाज जस्ट 36 किलो। कई बार
घर की सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल होता था इनके लिए। कितने उनको हम गोदी में लेके जाते थे डायलिसिस कराने के लिए। किसान ने भी किडनी दी, डोनेट किया, शायद उससे बड़ा कोई और डोनेशन नहीं कर सकता आदमी शायद अपने जीवन में, क्योंकि उन्होंने एक तरह से नई जिंदगी दी हम सबको। I believe every person who is born in India, along with their birth certificate, they should be given a certificate to donate the organs also. Unless and until they are really suffering from some rare diseases, they should be given the right to donate their organs. If a person has the opportunity, they should definitely donate their organs. I don't believe this is an opportunity. This should be a right. This should be a duty of every citizen or every person who is getting born in India to donate the organs. Because once we are dying, we don't have any control over our organs. Have any control on our organs. We should definitely be donating and helping out those who are suffering. Correct. Going to the ashes should help somebody, not be like we are taking our own body to ashes. Correct, sir. Say everyone to pledge their organs and help out those who are needy. It helps. It really helps. People like me, people like others who are suffering, they need your support. Definitely. Before going to ashes, at least pledge your organs for their support. मैं तो कहता हूँ कि हर इंसान को आगे आकर के खुद को
Honorable Governor of Sikkim, Sri Ganga Prasad, has arrived amongst us. May I request all present here to kindly rise? May I request all present here to kindly rise for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. You may kindly take your seats now. A very warm good morning to one and all present here. Namaskar. Honorable Governor of Sikkim and Chancellor of Sikkim Manipal University, Sri Ganga Prasad, Honorable Minister of Health and Family Welfare and IT Government of Sikkim, Dr. Mani Kumar Sharma, respected MLA Sikkim Legislative Assembly, Shri G.T. Dungel, respected Cabinet Secretary, Government of Sikkim, Shri G.P. Upadhyay, respected Dr. Avnish K. Seth, Head Manipal Organ Sharing and Transplant and Emeritus Transplant Gastroenterologist, respected Shri J.S. Dhama, Government of India, respected Health Secretary and Chief Electoral Officer, Government of Sikkim, Shri D. Anandan, respected Dr. Aditya Bajaj, Consultant Ophthalmologist and Corneal Transplant Surgeon, Disha Eye Hospital, Siliguri, respected Vice Chancellor, Sikkim Manipal University, Lieutenant General Dr. Rajan S. Gaiwal, all dignitaries, guests, faculties, and students. Today, we have assembled here at Sikkim Manipal University for the Symposia and Awareness campaign on Vistas of Organ Donation in India and Avenues for Sikkim. Organ donation is founded on the pillars of altruism. Organ donation is a noble social act and an honor. It is a deed that can be done to save lives of people even after one's death. It is a life-giving opportunity for those who are at the end of the line for hope. Today, let us all join hands and pledge for this noble act. अंगदान और जीवन दान दो पर्यायवाची शब्द है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हमारा अहोभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे समक्ष अति विशिष्ट एवं बौद्धिक व्यक्तित्वगण इकट्ठा हुए हैं, जो हमें इस महादान तथा इससे जुड़े अन्य अनेक तत्व से अवगत कराने जा रहे हैं। श्रोतागण से अनुरोध है कि वे इस मौके का भरपूर फायदा ले और अंगदान के अभियान को आगे बढ़ाने में कटिबद्ध रहने का प्रण करें। To start today's program, we would like to take the blessings of Almighty by lighting the ceremonial lamp.
May I now request Honorable Governor of Sikkim, Sri Ganga Prasad, Minister of Health and Family Welfare, Dr. M.K. Sharma, Sri G.T. Dungal, Sri G.P. Upadhyay, Dr. Avinash Sheth, Dr. G.S. Dhama, Dr. D. Anandan, Dr. Aditya Bajaj, Lieutenant General Rajan S. Grewal, Dr. K.S. Sherpa, Dr. Murlidhar V. Pai, and Dr. G.L. Sharma to kindly do the honor. Thank you all. You may kindly take your seats now. अब मैं माननीय उपकुलपति सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय डॉक्टर राजन एस ग्रेवाल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अति सम्माननीय महामहिम राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी को सम्मान हेतु खदा प्रदान करें। I request Sir to felicitate Honorable Health Minister, Department of Health and Family Welfare and IT Department, Government of Sikkim, Dr. Mani Kumar Sharma. Thank you, sir. You may kindly take your seat. I request Dr. Murlidhar V. Pai, Dean, Sikkim Manipal Institute of Medical Sciences, to kindly felicitate our esteemed dignitaries, Sri G.T. Dungal, Member, Legislative Assembly, Tadong.
Shri G.P. Upadhyay, IS, Cabinet Secretary, Government of Sikkim. Dr. Avnish Seth, Head of Manipal Organ Sharing and Transplant and Emeritus Transplant Gastroenterologist. Shri J.S. Dhamma, Government of India. Shri D. Anandan, IS, Chief Electoral Officer, Election Department and Commissioner cum Secretary, Health and Family Welfare Department, Government of Sikkim. Dr. Aditya Bajaj, Consultant Ophthalmologist. Dr. C.S. Sharma, SNM Hospital, Gangtok. Dr. Karma Lode Bhutia, Senior Ophthalmologist, SNM Government Hospital, Gangtok. Thank you, sir. May I now call upon Vice Chancellor, Sikkim Manipal University, Lieutenant General Dr. Rajan S. Grewal to deliver the welcome address. Namaskar, Pranam, Kashidilik, Kuzuzampo, Khamri, and a very good morning to you, ladies and gentlemen. यहाँ उपस्थित सभी सभाजनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे सर्वप्रिय और परम सम्मान्य और अति माननीय महामहिम राज्यपाल और हमारे सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय के सर्वप्रिय कुलाधिपति श्री गंगा प्रसाद जी, उपस्थित महानुभाव, मान्यवर शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उपस्थित समाज के सदस्य और हमारे प्रिय और होनहार विद्यार्थीगण, आप सभी का इस सभा में स्वागत है। समुचित सिक्किम परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और मैं एक क्षण लूंगा महामहिम की आज्ञा से स्वागत करने का हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी माननीय डॉक्टर मणि कुमार शर्मा, जो कि एक बहुत ही उत्तम चर्म रोग विशेषज्ञ भी हैं, Shri G.T. Dhungel, former secretary, MLA secretary from the PWD department, an eminent civil engineer, and a distinguished MLA from the Tadong constituency. It is truly a privilege and honor
to welcome a distinguished personality who has contributed immensely in the landscape of education in his amazingly brilliant tenure of 7 long years in the education department, and that is the current cabinet secretary of the government of Sikkim, Shri G.P. Upadhyay, IAS, CAPSEC of government of Sikkim. Welcome. I'd also take this opportunity to welcome Shri D. Anandan, Commissioner cum Secretary, Health and Family Welfare Department, Government of Sikkim. I'm going to take a little while, Avnish, to get to you, so don't mind. Between friends, we can take that liberty. So it is truly a privilege to welcome Dr. Sharma from the STNM Hospital, Dr. Karma, an eminent ophthalmologist from the STNM Hospital. And now I take this opportunity to welcome someone who actually we go back about 4.5 decades or more, and that is Dr. Avnish Kumar Seth. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for Dr. Avnish Kumar Seth. So it is our privilege and pleasure to welcome Dr. Avnish Kumar Seth, and I'll get back to him a little later. And truly take this opportunity to also convey our appreciation and compliments to our team of the family of Sikkim Manipal University, the Dean SMIMS, Dr. Muralidhar V. Pai, the Director SMID, Dr. J.L. Sharma, the Medical Superintendent of Central Referral Hospital, Dr. Yogesh Verma, eminent faculty, esteemed heads of departments, our heads of units, offices, and of course, our very dear, promising students who are the heart of our ecosystem and the reason why we are here. So, without taking much ado, I will take this opportunity to pay my obeisance to the Honorable Governor, who is truly eminent and very distinguished persona with more than 5 decades in public life, in which he has contributed immensely to society. सिक्किम के 16वें राज्यपाल परम सम्माननीय श्री गंगा प्रसाद जी का जन्म 8 जुलाई 1937 में बिहार राज्य के ऐतिहासिक तथा समृद्धशाली राजधानी पटना में हुआ था। आपने कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि एक विख्यात संस्था है, वहां से वाणिज्य विशेष में आपने स्नातक किया। आपके माता पिता स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी एवं स्वर्गीय श्री मुंदर शाह जी के घर में पैदा हुए। सम्मान्य राज्यपाल जी का पालन पोषण एक सफल व्यवसाय परिवार में हुआ था और आपके शानदार राजनीतिक जीवन काल में श्री गंगा प्रसाद जी ने असंख्य उपलब्धियां हासिल की हैं, जो कि काबिले तारीफ हैं। 18 साल बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य उन्होंने जो किया वो ऐतिहासिक है और वाकई में उन्हें एक सुनहरे काल के तरीके से माना जाता है। और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होते हुए उन्होंने जो भूमिका निभाई वो बिहार में आज तक मानी जाती है। सम्मान्य राज्यपाल जी अपने सहयोग विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ प्रवीणता होकर सिक्किम के लोगों के सेवा और संस्कार का मूल्य सिद्धांत तथा राष्ट्रीयता की भावना को जागरूक करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। सम्मान्य राज्यपाल जी का मानना है कि अंगदान और विशेष रूप से नेत्रदान सबसे बड़ा मानव सेवा है, सबसे बड़ी मानव सेवा है, जो कि एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार ला सकती है। वे हमेशा लोगों को अपने जीवन काल में रक्तदान करने और मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं और उन्होंने, आपको जान के ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि उन्होंने पहले ही अपने अंग पंजीकरण करा लिया है और अंगों का दान करने की शपथ ली है
और अनेक लोगों को प्रोत्साहित किया है कि वो भी इस Let's put our hands together for our Honorable Governor and Chancellor SMU. उनका ये मानना है कि मानव जीवन का एक महान अनुकरण प्रेरणा है और वो चाहते हैं कि सिक्किम राज्य के नावी क्षेत्र ग्राम पंचायत यूनिट GPU को गोद लेने में उन्होंने अनूठी पहल द्वारा सभी को शिक्षा देने में निपुण तथा कुशलवान बनाने में उनकी महामहिम की अतुल्य योगदान और उन्होंने जो इस पे उनका जो है वो काबिले तारीफ है। वह दूसरे के अनुकरण के लिए ग्राम पंचायत यूनिट के लिए आदर्श GPU को बदलने में उनका बहुत बड़ा श्रेय है। सिक्किम एक छोटा हो भौगोलिक तौर पे पर दिल बहुत बड़ा है, जहां कर्मठ, परोपकारी, हर्ष सहयोगी और मेहनतवान नवाजी लोग रहते हैं। सिक्किम को लोगों के दिल में बसने में माननीय राज्यपाल ने जो कि गर्मजोशी से प्यार दिया है वो अभिभूत प्रशंसनीय है। उन्होंने पूरे राज्य में व्यापक दौरा किया है और लोगों, जनसाधारण, पंचायत के सभी सदस्यों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने के जनता के विचार और महत्व देकर राज्य को विकास के क्षेत्र में उन्नति, तरक्की और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय राज्यपाल जी का मार्गदर्शन और कर कमलों द्वारा राष्ट्र के विकास के लिए अंगदान जीवन दान के उपहार है। ये नारा को साकार करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय परिवार के साथ सिक्किम और सिक्किम के नागरिक हमेशा माननीय राज्यपाल जी का प्रति आभारी, आपको आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन के लिए हम सदा कृतज्ञ रहेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अवनीश कुमार सेठ के बारे में कुछ चंद शब्द बोलूं। और डॉक्टर अवनीश सेठ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से हैं, distinguished graduate from the Armed Forces Medical College. We go back in the journey, but then he took off on a meteoric rise into a different galaxy as an eminent gastroenterologist, a distinguished hepatologist, a renowned transplant surgeon, and has been nationally and reputedly acclaimed and reputed in the global fraternity as well. He did his DM gastroenterology from the prestigious Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, with fellowships in hepatology and liver transplantation from Birmingham of the United Kingdom, and advanced GI endoscopy and endoscopic ultrasonography from South Carolina, Alabama, USA. And he has served on the governing council of various societies and over 100 publications to his credit. Dr. Seth is an Apex Technology Committee member of the National Organ and Tissue Transplant Organization, as also the Mohan Foundation. He is the principal director of gastroenterology earlier with the Fortis Hospital and for almost a decade. And we are fortunate amongst the Manipal family that such a distinguished persona joined us as the head of the Manipal Organ and Sharing Transplant. He's trained over 800 nurses, devoted his life, and prior to that in the army, he excelled as the anchor, the founder, and the protagonist of the Army Organ Retrieval and Transplant Authority, which the medical community would like to hear is acronymed as aorta, which is central, the blood vessel that takes our blood to from the heart to every part of the body. He's been awarded the Vishish Seva Medal by the President of India, and we are truly fortunate to have him amongst us. We look forward to your presentation, Avnish. Also amidst us is another very distinguished personality whom I perhaps missed out during my inaugural, and that is Dr. Aditya Bajaj.
a consultant cornea and cataract ophthalmologist from the Disha Eye Hospital at Siliguri. Dr. Bajaj completed his MBBS in 2006 from the Manipal College of Medical Sciences, Pokhara. He joined Kempegowda Institute of Medical Sciences at Bangalore for his ophthalmology degree and went on to do his DNB from Tamil Nadu and then went on to achieve distinction from the Royal College of Physicians and Surgeons at Glasgow in the United Kingdom and has done a huge number of corneal transplants and is the ophthalmological destination preferred in the northeastern region at the hospital where he works in Siliguri. That's the Bajaj Eye Hospital. Welcome, Dr. Aditya Bajaj. I also take this opportunity and I also seek your indulgence. It's a privilege and pleasure to invite Mr. Jhala, who in the course of my scripted conversation I missed out on. Mr. Jhala has held many eminent positions in the central government and has been a very distinguished member of various bodies and affiliated with various ministries where he has contributed with meritorious and distinguished service. With this, ladies and gentlemen, we welcome each one of you to this our campaign wherein we have pledged that we will do our best in the field of organ transplantation and devote our life towards this noble cause. In doing so, we will also bring before you the various facets of this. So once again, महामहिम राज्यपाल का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं और उनके हम शुक्रगुजार हैं और उनका अभिनंदन करते हुए उनसे मैं आज्ञा लूंगा कि आगे का कार्यक्रम बढ़ाने की। महामहिम, हम धन्य हैं कि आपने आज इस शोभा का हमारे प्रांगण में आकर अत्यंत धन्यवाद। Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, sir. Now take the privilege of our guest of honor, Avnish Seth, Head of Manipal Organ Sharing and Transplant and Emeritus Transplant Gastroenterologist. He is an alumnus of Armed Forces Medical College, Pune, and postgraduate institute of Medical Education and Research, Chandigarh. Dr. Seth has many pioneering works on organ donation and has worked in multiple capacities. To name a few, he is member APIX Technical Committee of National Organ and Tissue Transplant Organization, member of Advisory Board of Multi-Organ Harvesting Aid Network Foundation, and he has led the Healthcare Federation of India National Working Group on Organ Transplant campaign, for which he was awarded the Healthcare Awareness Campaign of the Year. A short film on organ donation won the prestigious Dada Saheb Phalke Award in the Best Public Service Advertisement category in 2017. Seth was invited to Geneva for a talk on organ donation in Asia in 2017. He was invited as champion of organ donation in India for the Tribute to Life project during Commonwealth Games at Birmingham, UK in 2022. And there are many more laurels to his credit. I don't want to delay. Without further ado, I request Dr. Avnish Kumar Seth to kindly deliver the keynote address on organ donation in India and roadmap for Sikkim. Dr. Avnish Seth. Honorable Shriman Ganga Prasad ji, Mr. M.K. Sharma, esteemed dignitaries, faculty members and students,
It is indeed a great pleasure and privilege for me to be here today and share a few thoughts on organ donation. And I thank General Rajan Grewal for giving me this opportunity. अंगदान महादान है और मैं बहुत लकी हूं कि पिछले 15 साल से मैं इसके साथ जुड़ा हूं। शुरू में आर्म्ड फोर्सेस ऑर्गन रिट्रीवल एंड ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, उसके बाद फिर 10 साल फोर्टिस ऑर्गन रिट्रीवल एंड ट्रांसप्लांट और अब मणिपाल अस्पताल जिसमें 27 हॉस्पिटल हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल के 18 अस्पताल थे और ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो ट्रांसप्लांट करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं 500 से अधिक लोगों की जिंदगी इस प्रोग्राम ने बदली है, पर मैं इतना ही कहूंगा कि ये काफी नहीं है। इस स्लाइड को देखिए और हमारा जो दिल है वो गर्व से फूल जाएगा। हम में से शायद ही किसी को मालूम होगा कि इंडिया नंबर 3 है दुनिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फील्ड में। अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया का ही नंबर है। लेकिन हाँ, इस पे ताली जरूर होनी चाहिए, थैंक यू। लेकिन 13,000 ट्रांसप्लांट और रिक्वायरमेंट कितनी? 4 लाख। तो बहुत दूर है अभी हमारा जो एम है, बहुत कुछ करना है हमने इसमें मिलके। तो अगर पूछे कि ये अंग आते कहां से, तो 2 मेन सोर्स है अंगों के। एक, जो हमारी कंट्री में 80% ट्रांसप्लांट ऐसे होते हैं कि नियर रिलेटिव्स विद इन द फैमिली कोई अपना ब्लड ग्रुप मैच ऑर्गन डोनेट करता है। इसमें खाली एक किडनी या आधा लिवर, 2 ही अंग हैं जो हम लोग इस प्रोग्राम में चला सकते हैं। तो अगर हमें हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, अगर हमें लंग ट्रांसप्लांट करना है, इंटेस्टाइन पैंक्रियास ट्रांसप्लांट करना है, तो ये लिविंग डोनर से तो हो नहीं सकता। तो हम जिस चीज के लिए मोस्ट जो हम लोगों ने बनाई है, जिस चीज के लिए नोटो काम कर रही है, वो है मरने के बाद अंगदान करिए। अपने अंगों को जलाए नहीं, उनको दफनाए नहीं, कृपा करके दान करिए। और ये कैसे होता है, इसकी प्रतिक्रिया मैं आपको अपना एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूंगा। ये जो 6 जवान आप देख रहे हैं, ये दिखाते हैं कि ऑर्गन डोनेशन इज अ मिरेकल, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज अ मिरेकल। ये 6 जवान लिवर सिरोसिस से पीड़ित थे और इनको सबको मरने के बाद किसी ने अपना लिवर दान किया और उसके बाद इनकी जिंदगी बदल गई। इनकी जिंदगी क्या थी? अस्पताल से अस्पताल, खून की उल्टियां, पेट में पानी, पीलिया, भूख नहीं लगना, एक तरह से मरने की इंतजार कर रहे थे। और फिर सडनली वो घड़ी आई जब किसी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम अंगदान करते हैं। और देखिए क्या हुआ, नॉट ओनली दे आर अलाइव, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखिए, बैक इन यूनिफॉर्म, बैक इन एक्टिव ड्यूटी। सो ये है अंगदान का मिरेकल। लिवर ट्रांसप्लांट करा के लोग ओलंपिक्स में हिस्सा ले चुके हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक्स में। बार्सिलोना करके फुटबॉल क्लब है, उसके लिए कोई खेल चुका है लिवर ट्रांसप्लांटेड। इस तरह का क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका हो सकता है, एंड दिस इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर। तो सबसे पहली बात समझने की है कि नॉर्मल डेथ में अंगदान नहीं होता। अगर हम घर में मृत्यु होती है तो हम लोग अंगदान नहीं ले सकते, क्योंकि हार्ट रुक गया है। हार्ट रुक गया तो ब्लड सप्लाई रुक गई, तो ऑर्गन्स डेड हो जाते हैं। सो ऑर्गन डोनेशन पॉसिबल होता है मस्तिष्क मृत्यु या ब्रेन डेथ के सिनारियो में। मस्तिष्क मृत्यु में क्या होता है, दैट द इंजरी अकर्स टू द ब्रेन। तो या तो हेड इंजरी हुई, या स्ट्रोक हुआ, ब्रेन हेमरेज हुई,
तो ब्रेन डेथ हो गई, हम अस्पताल में हैं, हम वेंटिलेटर पे हैं, हमारा दिल भी चल रहा है अभी कुछ घंटों दिनों के लिए, लेकिन ब्रेन डेड हो गए, ब्लड सप्लाई चल रही है। इस हालत में 4 डॉक्टर मिलकर कुछ टेस्ट करते हैं बेड साइड में, उसका कोई कॉस्ट नहीं होता, ये नहीं कि महंगे महंगे टेस्ट हो रहे हैं, और 6 घंटे बाद दोबारा करते हैं और उस पेशेंट को ब्रेन डेथ डिक्लेयर करते हैं। ये इतना आसान काम नहीं है फैमिली के लिए एक्सेप्ट करना। हम किसी को आईसीयू में बुला के बोलते हैं वी आर सॉरी बट अब आपके भाई साहब इस दुनिया में नहीं रहे। वो हमें कहते हैं भाई साहब अब क्या बात कर रहे हैं, इनका दिल तो अभी चल रहा है, दिल चल रहा है और आप कह रहे हैं कि दुनिया में नहीं रहे। तो ये जो डिलेमा है समझने का, ये आईसीयू में लास्ट मिनट पे नहीं होना चाहिए। ये स्कूलों से कॉलेजों से हम सबको पता होना चाहिए कि ब्रेन डेथ क्या होता है। अभी हम लोग सब बात कर रहे थे कि मैंने एमबीबीएस किया, एमडी किया, पीजीआई चंडीगढ़ से डीएम किया, किसी ने हमें ब्रेन डेथ के बारे में नहीं बताया। इंग्लैंड गए तो पता लगा कि ऐसा भी होता है। अब जो हमारी नई पीढ़ी है, आप लोग सब हैं, आप समझिए और इसको आगे चलाइए। तो इस हालत में ब्रेन डेथ के बाद ये ऑर्गन्स हम रिट्रीव कर सकते हैं, हार्ट और लंग्स, लिवर, किडनीज, यू कैन रिमेंबर देम इन पेयर्स, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन एंड पैंक्रियास। 6 ऑर्गन्स, तो 2 लंग्स हो गए, 2 किडनी हो गई, तो एक आदमी मरने के बाद 8 जान बचा सकता है। सो दिस इज हाउ द फिगर ऑफ 8 कम्स इन। जब नॉर्मल डेथ होती है, घरों में भी होती है, अस्पताल में भी होती है, जब हमारा हार्ट रुक जाता है तो हमारे जो टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स नहीं, आंखें, कॉर्निया, स्किन, बोन्स, ये 6, 8, 10 घंटे तक भी जिंदा रहते हैं बिना सब ब्लड सप्लाई के। तो आई डोनेशन को ऑर्गन डोनेशन से कंफ्यूज नहीं करना है हमने। अंगदान अलग चीज है और कॉर्निया डोनेशन जो टिश्यू डोनेशन है वो अलग चीज है। अब हम कहते हैं कि इंडिया में ऑर्गन डोनेशन नहीं होते। पिछले 20 साल से हम लोग लगे हुए हैं, बहुत लोग, और देखिए 900 लोग, 700 से 900 लोग अपने सारे ऑर्गन्स हर साल इंडिया में डोनेट करते हैं। अब कोविड की वजह से लास्ट कुछ सालों में ये कम हो गया, तो कैसे बढ़ाया जाए, आइए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। मेरे हिसाब से ऑर्गन डोनेशन रेस्ट्स ऑन 3 पिलर्स। गवर्नमेंट ने क्या करना है, अस्पतालों ने क्या करना है और पब्लिक ने क्या करना है। तो आइए एक एक करके तीनों देखते हैं। गवर्नमेंट ने अपना काम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बखूबी निभा दिया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट 1994 में बना, उसके बाद 2011 में नया एक्ट बना, और ये बहुत ही अच्छा एक्ट है जिससे हर चीज बिल्कुल लीगल तरीके से होती है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस एक्ट को हमने अभी अडॉप्ट नहीं किया सब स्टेट्स में। अंगदान अपने आप नहीं होता है, अंगदान करना पड़ता है। हम जब स्पेन, अमेरिका के डिपार्टमेंट्स में जाके मिलते हैं तो वहां और डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गन डोनेशन भी होता है। हर हॉस्पिटल में कोई ऐसा होना चाहिए जो सोचे इसके बारे में कि क्या ऑर्गन डोनेशन हो। एंड दिस हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। टॉप मींस प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इसके बारे में जिक्र किया, इतनी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, सब लोग इसको कह रहे हैं कि हम करें। और नोटो जो मैंने बताया, जिसका मैं एडवाइजर हूं, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी बनी एक्ट के बाद, और ये दिल्ली में है। और 5 जो रेड में है, रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन भी बनी, रोटो। और अब हर स्टेट में सोटो बन रही है, 22 स्टेट्स में सोटो बन चुकी हैं। सिक्किम में अब हम लोग सब जुड़ेंगे और सोटो बना रहे हैं, और हमारी जो रोटो होगी वो कलकत्ता में होगी, जिसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है कंट्री में। 900 लोग सारे अंगदान करते हैं, लेकिन सारा काम हरे में जो है वो लोग कर रहे हैं। साउथ इंडिया से गुजरात मैक्सिमम डोनेशंस यहां होती हैं। जो व्हाइट में है वहां काम थोड़ा बहुत शुरू हो चुका है, लेकिन हमारी जो जरूरत है, ये जो ऑरेंज है जिसमें हम लोग भी हैं सिक्किम में, इसको
हरा रंग में करना है। अब देखते हैं हम लोग कितने साल में इसको ऑरेंज से हरा रंग कर सकते हैं। ये दोनों हमारे फ्लैग के कलर हैं। मैं जब यहाँ आने से पहले पढ़ रहा था, मैंने देखा कि ये हम पहली ऑर्गेनिक स्टेट है कंट्री की, तो यहाँ अगर हम कैंपेन इनिशिएट करते हैं तो आई और सी हटा दें तो ऑर्गन बचता है। तो हम लोग जरूर इसको प्रोत्साहन कर सकते हैं। मेडिकल कम्युनिटी की बात करते हैं। जब एक ब्रेन डेथ एक हॉस्पिटल में होता है, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है। उसको डिक्लेयर करा जाता है, फैमिली से बात करते हैं कि आप अंगदान करें, फैमिली हाँ बोलती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर मल्टी ऑर्गन रिट्रीवल्स होते हैं और गवर्नमेंट उन ऑर्गन्स को अलॉट करती है। हॉस्पिटल के हाथ में नहीं हमने किसको देना है, तो गवर्नमेंट इसको अलॉट करती है। तो ये प्रोसेस हम लोग सोचते हैं कि हर एक हॉस्पिटल में होता ही होगा, लेकिन यही हमारी प्रॉब्लम है। और मैं आपको अपनी मदर इन लॉ का एग्जांपल बताता हूं, और जो हमारे साथ बीती, ये हर एक हॉस्पिटल में डे टू डे बेसिस पे इंडिया में होता है। उनको ब्रेन हेमरेज हुई और हम उनको दिल्ली के एक बहुत बड़े अस्पताल में ले गए आज से 7-8 साल पहले, और फिर हमने उनका ऑर्गन डोनेशन किया। ये उनकी ऑबिचुरी हम लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया में छापी ताकि लोगों को पता लगे कि अंगदान भी होता है। जब उनको ब्रेन हेमरेज हुई तो हमने उस हॉस्पिटल में पूछा कि उनको नहीं मालूम था कि मैं ऑर्गन डोनेशन में काम करता हूं, वो सोच रहे थे कि मैं गैस्ट्रो में हूं। तो मैंने पूछा कि क्या इनकी ब्रेन डेथ हो गई है, तो बोले कि नहीं, अभी 95% हुई है। मैंने पूछा कि आपके हॉस्पिटल में ब्रेन डेथ कमेटी है, आपने कभी ब्रेन डेथ डिक्लेयर किया है? नहीं किया। हमारे पास फॉर्म्स हैं डिक्लेयर करने के? नहीं है। वो सोल्यूशन है जिसमें ऑर्गन निकाल के रिजर्व करते हैं? नहीं है। तो दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में अगर ऐसा हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि पूरी इंडिया में क्या होता है। फिर हमने उनको शिफ्ट किया वेंटिलेटर पे। देखिए हार्ट अभी चल रहा है ब्रेन डेथ में, वो सीटी स्कैन में जो व्हाइट देख रहे हैं वो सारा ब्रेन हेमरेज है। ऐसे में कोई बचता नहीं है, सबको मालूम है। तो नेक्स्ट स्टेप में गए और फिर उन्होंने 5 लोगों में अभी वो जीवित है। सो ये जो होता है, ये ट्रांसप्लांटेशन एक्ट में लिखा है। अगर हम ब्रेन डेड फैमिली से अंग नहीं मांगते तो हम अगेंस्ट द लॉ जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट। ये हर एक आईसीयू के बाहर ये बोर्ड है, कई अस्पतालों में है अभी, कि वी आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू आस्क यू फॉर ऑर्गन्स। दिस इज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद द फैमिली कि हम कुछ आपको बताना चाहते हैं जो हमारे गवर्नमेंट ने बोला है हमें करने को, और ये बोर्ड आईसीयू के बाहर लगा हुआ, आप इसको पढ़ लें। सो वी हैव टू मेक अ मूव। फैमिली से बात करना आसान नहीं होता ऐसे में, दे आर क्राइंग, दे आर इन अ ग्रीफ, तो उसकी भी बहुत एक ट्रेनिंग चाहिए होती है कि उनसे कैसे बात करनी है। उनको थोड़ा समय देना होता है टू एक्सेप्ट डेथ। पहले वो डेथ एक्सेप्ट करें, फिर ग्रीव करें, अगले दिन तो आप उनसे बात करें कि अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं। तो जो कमरा होता है जहां इस फैमिली से हम बात करते हैं, वो ऐसा कुछ होता है जो हमारा मणिपाल हॉस्पिटल में हमने बनाया है, जो अभी दीपा मलिक जी ने थोड़े दिन पहले इनॉग्रेट किया हमारे लिए। तो उस कमरे में बैठने से ही लगता है कि ये माहौल अंगदान का है। उनको लगता है कि 800-900 लोग तो कर चुके हैं, ये कोई लॉ भी कहता है कि करो, तो फिर हम भी करें। उस कमरे में आप उनको बिठा दें, 5 मिनट के लिए पानी पिलाएं, आधी काउंसलिंग तो वहीं हो जाती है। कॉरिडोर में खड़े होके आप फैमिली से अंग नहीं मांग सकते, और अगर ऐसा रूम आपके पास नहीं है तो हम लोग सबको बोलते हैं कि प्रेयर रूम में ले जाओ, बाहर चप्पल जूते उतारें, हाथ जोड़ के बैठें, फिर बात करें, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। इस तरह के कैलेंडर हम लोगों ने बनाए। मैं आपको 2008 के कैलेंडर बता रहा हूं, आर्मी हॉस्पिटल में जब हम लोग थे। ये देखिए, ये इंडिया के सबसे छोटे डोनर हैं। सिद्धार्थ मलिक 1.5 साल के थे जब बालकनी से गिरे और इनकी ब्रेन डेथ हुई, और मेजर मलिक और उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने डिसीजन लिया कि इनके डोनेट करें ऑर्गन्स, और उनकी 2 छोटी छोटी किडनी दोनों एक एडल्ट में डाली गई, 1.5 साल के बच्चे की।
इस तरह का कैलेंडर अगर आपके रूम में लगा है, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो फिर कौन ना करेगा। और दूसरी बात, अभी डॉक्टर आदित्य है यहाँ पे जो कॉर्निया डोनेशन के बारे में आपको बताएंगे। ऑर्गन डोनेशन तक पहुंचने के लिए हमें कॉर्निया डोनेशन तो रोज ही करना चाहिए बात। तो कॉर्निया डोनेशन एक ऐसी चीज है जो हमने अभी सारे हॉस्पिटल में शुरू किया है। जो नर्सेज हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल में 800 नर्सेज को हम लोगों ने ट्रेन किया कि आप एक सवाल पूछ लो बस उस फैमिली से। रात को 2 बजे डेथ हो गई, आप उनसे पूछे कि आप नेत्रदान करना चाहेंगे। कोई पूछता ही नहीं है हमारे देश में, सब भाग दौड़ रहे होते हैं कि किसी तरह से बस अब घर चलें और नेक्स्ट स्टेप करें। अगर हम तरीके से चलें और पूछें, ट्रेनिंग करें, तो बहुत लोग हाँ बोलते हैं। ये देखिए, डोनेशन हुई, अब डॉक्टर आदित्य आपको बताएंगे कि एक कॉर्निया की 5 लेयर होती हैं, तो हम उसको डिवाइड करके एक कॉर्निया को 2 लोगों में भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए कैसे मैसेज हमारा अभी हॉस्पिटल में भी आया कि वी आर वेरी हैप्पी कि डोनेशन होगी और 3 लोगों को रोशनी मिली आंखों की। और ये फिगर है मेरे हॉस्पिटल का। जब से हमने फरवरी में सारे नर्सेज को ट्रेन किया, काफी सारी डेथ्स में कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, सेप्सिस वगैरह इन्फेक्शन होता है, लेकिन जब फैमिली से बात करें 22 में से 7 लोगों ने बोला कि हाँ आप प्लीज ले लीजिए। तो 1/3 लोग अगर आपको हाँ कर रहे हैं, तो कॉर्निया डोनेशन हमारा क्यों नहीं हो रहा देश में? क्योंकि हम मांग ही नहीं रहे। और मांगने के लिए सबसे अच्छा कौन है? कोई घर से थोड़ी आएगा रात को 2 बजे मांगने के लिए। जो स्टाफ वहां पे ड्यूटी कर रहा है उन्हीं को ट्रेन करें और आगे चलें। अवेयरनेस की बात करते हैं। अभी बात कर रहे थे, हम लोग सब बैठे थे कि स्कूलों से ये शुरू होना चाहिए। एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि 10 साल की मेहनत के बाद अब ये हमारा जो नेशनल एनसीईआरटी के सिलेबस में वी हैव इट ऑलरेडी देयर। बायोलॉजी में तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में साइंस में है। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सिक्किम में भी हम लोग इसको बच्चों के स्कूल में डालें एज अ चैप्टर, ताकि उनको शुरू से ही मालूम रहे। मेडिकल कॉलेजेस में फोरेंसिक मेडिसिन, सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, ये तीनों सब्जेक्ट्स में ऑर्गन डोनेशन के ऊपर लेक्चर्स डाले गए हैं, टॉपिक्स डाले गए हैं जो आज से कुछ साल पहले नहीं थे। प्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अखबारों में जब इस तरह का आता है कि ग्रीन कॉरिडोर में देखिए इस तरफ 130 140 की स्पीड में हम लोग हार्ट लेके जाते हैं और उसका ट्रांसप्लांट करते हैं। और हार्ट को आप बाहर नहीं रख सकते, एक बार आपने निकाल लिया 4 घंटे के अंदर दूसरे पेशेंट में उसको डालना होता है। तो हार्ट के लिए इस तरह की स्पीड हमें जरूरी है। किडनी 24 घंटे तक रह जाती है, उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर की जरूरत नहीं होती। रेडियो 121 रीजनल लैंग्वेजेस, रेडियो लैंग्वेजेस हैं हमारी कंट्री में। तो सिक्किम में भी अगर हम रेडियो को यूज करें, बड़ा पावरफुल मीडियम है जो कोने कोने तक पहुंच जाता है। टेलीविजन, शायद आप लोगों ने देखा हो, कौन बनेगा करोड़पति पे ऑर्गन डोनेशन पे एक स्पेशल सेक्शन था। अवेयरनेस कैसी बढ़ाई जाए, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। 2 हमारे महत्वपूर्ण देश में है, एक है ऑर्गन डोनेशन डे 27 नवंबर, और एक है ऑर्गन डोनेशन वीक जो अगस्त में होता है। इसमें हम लोग खूब चर्चा करते हैं अंगदान की। ये देखिए कैसे 27 नवंबर को हमारे मॉन्यूमेंट्स देश के हरे में जलाए जाते हैं, लाइट अप करते हैं ताकि इसकी अवेयरनेस बढ़े। और नॉटो भी कई तरह के फंक्शंस करती है, फैमिलीज को बुला के उनका सम्मान करते हैं। फैमिली का सम्मान जब हम लोग बॉडी वापस करते हैं उनको डोनेशन के बाद, तो हम सारे हॉस्पिटल्स को बताते हैं कि अपनी तरफ से एक रीथ जरूर रखें और बड़े सम्मान के साथ उनको थैंक यू करते हुए कि आपने इतना अच्छा काम किया, इस तरीके से हम फैमिली को विदा करते हैं। और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है उस फैमिली को कि हमने, इनफैक्ट एक फैमिली ने हमें बताया ये सब देख के कि थैंक यू वेरी मच, यू हैव सेंट माय सन लाइक अ गॉड। इतने अच्छे से आपने उनको विदा किया है। तो ये सारा दिल से करना पड़ता है। ये कभी हमने एक फैमिली को, डोनर फैमिली को फेलिसिटेट किया, तो हम लोगों ने उनके लिए स्पेशल स्टैम्प्स रिलीज कराए। तो हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट है देश का, उनका माई स्टैंप इनिशिएटिव है, उनको रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने, अब ये डोनर है उनके नाम पे एक्चुअली स्टैम्प्स छपे हुए हैं और ये हमने फैमिली को प्रेजेंट किया। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं।
आपको मालूम है कि हमारे देश में मॉन्यूमेंट्स हैं ऑर्गन, कभी आप जयपुर जाएं तो इंडिया का सबसे अच्छा मेमोरियल अंगदान स्मारक, अंगदाता स्मारक इतना बढ़िया है, बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। ऐसे ही कुछ हॉस्पिटल में भी है। हमारे हर एक फोर्टिस हॉस्पिटल में हम लोगों ने जैसे इंडिया गेट है वो कॉन्सेप्ट लेते हुए वॉल ऑफ ट्रिब्यूट बनाई है, जहां हर डोनर एक स्टार है। और कई बार हम देखते थे कि उनका बर्थडे होगा तो फैमिली आएगी, साइड में फूल वगैरह लेके आएंगे, हाथ लगा के फोटो खिंचवाते हैं। तो जो डोनर फैमिलीज हैं उनको आप कुछ मॉनिटरीली नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने दिल से किया, अल्ट्रुइस्टिक जेस्चर है, तो उनका सम्मान तो करना है। अब सम्मान कैसे करना है, एक एग्जांपल आपको बताता हूं। ये फैमिली को हमने हैदराबाद से लाना था दिल्ली में सम्मान देने के लिए, अपने बेटे का अंगदान किया था। तो इंडिगो के जो ओनर हैं वो अपनी मदर को मेरे को दिखाने लाए, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप अनाउंसमेंट करा दीजिए जहाज में। तो दुनिया में पहली बार 30,000 फुट पे अनाउंसमेंट करी गई कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे बीच में मिस्टर एंड मिसेस कुरापति हैं जिन्होंने अपने बेटे का अंगदान करके 5 जीवन बचाए। इस तरह के जेस्चर्स बहुत हैं जो हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि 4 लाख लोग ऑर्गन्स लेना चाहते हैं पर देना क्यों नहीं चाहते हम लोग। तो हमें प्लेज करने चाहिए जीते जीते, जैसे हमारे गवर्नर साहब ने बताया कि उन्होंने भी प्लेज किया है, तो हम सब क्यों ना प्लेज करें। और कुछ स्टेट्स ने, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं उस टाइम पे आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाया जाता है कि ब्रेन डेथ क्या होता है, अंगदान क्या होता है, और आपसे ऑप्शन लेते हैं आप करना चाहोगे। तो ये सिक्किम में भी अगर हम शुरू करें, इट विल बी अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। इस तरह के कियोस्क प्लेजिंग करिए। अभी सारे मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली में हमने प्लेज ली थी, एंड आप लोग भी जरूर करिए, ऐसा कियोस्क बनवाइए ताकि कोई हॉस्पिटल में बैठा बैठा अपने ऑर्गन्स प्लेज कर सके। एक चीज बताना चाहूंगा कि ऑर्गन प्लेजिंग की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। अगर हमने प्लेज किया, हम तो वेंटिलेटर पे होंगे, हम तो इस दुनिया में नहीं रहे होंगे, लेकिन हमारे प्लेज करने से हमारी फैमिली को पता होगा कि हम ये चाहते थे, तो उनको वो डिसीजन लेने में आसानी होगी कि हमें इनके ऑर्गन्स लेने चाहिए। सो प्लेजिंग हैज नो लीगल वैल्यू। अगर आप मणिपाल हॉस्पिटल में प्लेज करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आप अमेरिका में भी अगर हेड इंजरी होती है तो वहां भी डोनेट कर सकते हैं। इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन कि हाँ मैं ये करना चाहता हूं। बाकी तो डॉक्टर्स नहीं देखना है इन द लास्ट मिनट। सो लास्ट 1 or 2 स्लाइड्स। लोग बोलते हैं कि 20 साल से हम इतना कुछ कर रहे हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा। सो ये जो कॉन्सेप्ट है टिपिंग पॉइंट का, कि हम करते रहें, एक टाइम आएगा जब एकदम से बाढ़ आएगी और हमारा देश सबसे आगे निकल जाएगा। Few points I have for Sikkim, what we can do based on a few discussions. पहले तो हमें ट्रांसप्लांटेशन एक्ट को अडॉप्ट करना होगा। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अभी कुछ स्टेट्स को नहीं किया तो हमें करना चाहिए। सॉटो, अभी हम लोग बैठे बात कर रहे थे कि हमें जहां भी सिक्किम में वी हैव वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स, हमें सॉटो बनाना चाहिए। एक एडवाइजरी ग्रुप होना चाहिए जिसमें सब एक्सपर्ट्स हेल्प करें। इसमें एप्रोप्रिएट अथॉरिटी चाहिए होती है, जो अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब की हमने क्रिएट कर दी है ब्रेन डेथ कमेटी वगैरह बनाने के लिए। और कॉर्निया डोनेशन प्रोटोकॉल हमें जरूर करना चाहिए। एक किडनी ट्रांसप्लांट, ये हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि हर एक स्टेट में कम से कम एक हॉस्पिटल हो जो किडनी ट्रांसप्लांट करे। तो इतना बढ़िया हॉस्पिटल जो हमारा है उसमें हम शुरू कर सकते हैं। और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को एम्प्लॉय करें, फैमिली से बात करें कॉर्निया डोनेशन के लिए। एंड अगर हम जब तक वेट कर रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट की, हम नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बन सकते हैं। उसका भी एक फॉर्म होता है जो सब हमारे पास अवेलेबल है। प्लेजिंग फैसिलिटी स्टार्ट करें स्टेट में, बच्चों को पढ़ाएं, अवेयरनेस करें, टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया, इसकी कोई लिमिट नहीं, हम कितना कुछ इसमें कर सकते हैं। एक 5 दिन का सर्टिफाइड कोर्स हम लोग दिल्ली में अभी किया था, हमने सिक्किम अपने हॉस्पिटल में, और हमारे यहाँ से 4 लोग आए थे अटेंड करने के लिए। So we have some expertise within this hospital who are fully trained. This is not a certified course. So please use our expertise and take it forward. Last slide. अगर कुछ भी सक्सेसफुली करना हो तो ये स्टेप बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो प्रबल इच्छा,
We must have overwhelming desire which should start from the top. Governor साहब यहाँ आए हैं. From the top the desire is there. प्रबल इच्छा. उसके बाद जम के परिश्रम करें. उसके बाद अगर कई बार होगा आप 10 फैमिली से बात करेंगे सब मना कर देंगे. Then don't give up. Perseverance. लग्न. वो सबसे जरूरी है इसमें. 100 फैमिलीज ने भी अगर मना कर दिया तो 101 भी हाँ करेंगे. ये मत बोलिए कि हाँ हमारी डेस्टिनी में ही नहीं है ऑर्गन डोनेशन. डेस्टिनी तब मिलेगी पहले 3 स्टेप करेंगे. सो थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन. बात सर, हमारा देश 3 नंबर पे है अंग प्रत्यारोपण में. तालियां बजी, लेकिन हमारी जरूरत और हमारे संसाधन के बीच की दूरी अनंत है. धन्यवाद सर ये आंकड़े देने के लिए और हमें आईना दिखाने के लिए. छोटे से बच्चे के साथ कई रोंगटे खड़े कर देने वाले इन उदाहरणों को देखकर अब एक बात तो पक्की है कि जरूरत और संसाधन के बीच की दूरी कम करने के लिए हम सबको कंधे पे कंधे मिला के चलने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. थैंक यू सर. धन्यवाद. Now relax a bit and tap melody of the hills, bringing to you Pali folk dance by students of paramedical sciences, Sikkim University. रुमाल क्या मालूम कोटे को खलती माँ. रुमाल क्या मालूम कोटे को खलती माँ. माफी हुन्छ क्या मालूम माया को गल्ती माँ. माफी हुन्छ क्या मालूम माया को गल्ती माँ. रुमाल क्या मालूम चढ़्यो क्या मालूम तिम्रो छालामा. क्या मालूम तिम्रो छालामा. विरक्तिको चाडो कसको मुटु हमले थर 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 थर. विरक्तिको चाडो कसको मुटु हमले थर 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 थर. ढाकाको ढल्काउला सिरैमा. ढाकाको ढल्काउला सिरैमा. एकै हुन्छ कि गुल्मी वैशाल मिलेमा. एकै हुन्छ कि गुल्मी वैशाल मिलेमा. पहिले त बाजेको पालामा मोहर गन्थे कालामा. लाली चढ्यो क्या मालूम तिम्रो गालामा. क्या मालूम तिम्रो छालामा.
जुनी काछु भन्थ्यौली मसिताई मनको साइनो जोडी छौ कोसिताई जुनी काछु भन्थ्यौली मसिताई मनको साइनो जोडी छौ कोसिताई पहिले माया मोहनी लगाउने अहिले भेटो भन्दा हिँड आउने पहिले माया मोहनी लगाउने अहिले भेटो भन्दा हिँड आउने हो यो जमाना पैसाको भर नहुने पानी र पैसाको हो यो जमाना पैसाको भर नहुने पानी र पैसाको रमाउँदैन पाइहाल्छौ जोबन तिम्रै रूपमा नलगाउँथ्यो मन रमाउँदैन पाइहाल्छौ जोबन तिम्रै रूपमा नलगाउँथ्यो मन तिम्रै नाम जपेर बस्ने हो आइनौ भने खरानी बस्ने हो तिम्रै नाम जपेर बस्ने हो आइनौ भने खरानी बस्ने हो Wonderful. Today we have amongst us Dr. Aditya Bajaj, consultant ophthalmologist from Disha Eye Hospital, Siliguri, West Bengal. Dr. Bajaj was born on 10th April 1983. He has completed his MBBS from Manipal College of Medical Sciences, Pokhara, Nepal in the year 2005. He subsequently did his DOMS from Kempegowda Institute of Medical Sciences, Bangalore, Karnataka in the year 2009. Thereafter, he completed DNB in ophthalmology from Arvind Eye Care System and Postgraduate Institute of Ophthalmology in Tamil Nadu in 2011. Dr. Bajaj is a fellow of the Royal College of Surgeons, Glasgow in ophthalmology from 2019. He also did his fellowship in cornea and anterior segment from Disha Eye Hospital, Barrackpur in Kolkata in the year 2013. Dr. Bajaj's field of specialization is deep anterior lamellar keratoplasty and eye banking, to name a few. He is the member of All India Ophthalmological Society, Delhi Ophthalmological Society, West Bengal Ophthalmological Society, and Tamil Nadu Ophthalmological Association. Dr. Bajaj is also the member of Eye Bank Association of India and Cornea Society of India. May I now take this opportunity to call upon Dr. Aditya Bajaj to deliver his talk on overview of corneal donation and keratoplasty. Dr. Aditya Bajaj. Thank you. Kind introduction. Happy to be. Diseases are among the major causes of vision loss and blindness in the world today after cataract and glaucoma. So in India alone, we have 6.8 million people with vision less than 6/16 one eye. And out of these, almost a million are
having bilateral involvement, that is almost 10 lakh. It is expected that individuals would have this with unilateral corneal blindness would have already increased to 10.6 million by the year of 2020. And in every year, we add 25,000 to 30,000 corneal blind in India. And in the global cases, if you take the global scenario, 90% of corneal blindness occurs in developing countries like ours. So very few studies have been conducted in this region. इसमें पाया गया है कि करीबन 24% से 36% लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन में कॉर्निया ब्लाइंड है अकॉर्डिंग टू दीज 2 स्टडीज. तो इसका क्या सॉल्यूशन है? सो वी नीड अ वेरी रॉबस्ट आई बैंकिंग सिस्टम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया as well as one ophthalmologist in every district who is trained in cornea surgeries. So eye banking started in India way back in 1945 in RIO Madras, and the first successful cornea transplant was done by Dr. R.P. Dhanda and Dr. Kalevar in 1960. And motivational work was done by Dr. G. Mazumdar in Gujarat in 1965. The Eye Bank Association of India was established in 1989, and the medical standards of eye banking in India was established in 1999. So in India, we follow a 3-tiered system. So first is the eye bank training center. तो ये क्या करती है? ये दूसरे आई बैंक्स को ट्रेन करती है, उनके पर्सनल को ट्रेन करती है उनके फंक्शनिंग के लिए. Also they are involved in policy making. So what are the functions of an eye bank? Tissue harvesting, जैसे टिश्यू को कलेक्ट करना, उसको इवेल्युएट करना, उसको प्रिजर्व करके रखना, and then network with various corneal surgeons as well as their own centers for proper tissue distribution. Also, one of their most important activity is to create public awareness and do research activities. Then comes the eye donation centers. So eye donation center वही सब करती है जो eye bank करती है, except the tissue evaluation part. They collect, they harvest the tissue, they preserve it, and they have to send it to an eye bank for further evaluation. So कब ये किया जा सकता है? After death, as early as possible, as soon as the consent and the death certificate is available, and maximum by 6 hours. And the process is very simple. The deceased family has to inform the nearest eye bank, and for that the eye bank should be ready 24/7 with telephone service and dedicated personnel. So I'll just share a short video. ये हमारे सेंटर में corneal scleral button excision. The author does not have any financial interest. Corneal scleral button has several advantages over whole globe excision. It reduces corneal contact with the toxic aqueous. The tissue can be transferred to the storage media directly, and it is cosmetically more acceptable to the donor family. However, on the other hand, there is the cost of media involved. The technique is initially difficult, and also we need to have more instruments available. For corneoscleral rim excisions, we carry an instrument drum set and an insulated box with ice packs for the tissue. The instruments include sterilized instrument tray, drapes and gowns, gloves, antibiotic drops, iodine drops, cotton buds, syringe, and a scleral shell. The instrument includes eye speculum, conjunctival and corneal scissors, forceps, muscle hooks, artery clamp, a template mark, and a number 11 blade. The process starts by taking consent from the donor family. After wearing protective wear and gloves, the eyes are examined first in torchlight to look for any gross deformities, and at the same time, the exposed parts of the body is examined for any disease or high-risk behavior signs. After examination, the eyelid and the skin around the eyes are cleaned with 10% povidone iodine, and the lid margins are cleaned using a cotton swab in iodine. Care is taken to clean both the upper and lower lid margins carefully. After the cleaning process is complete, now we move on to the aseptic part of the procedure, and the gloves are changed.
The donor's eyes are covered with surgical drape, and this can be now used to keep the instrument as a clean zone. So the instruments are laid out on the drape. After applying the speculum, once again we clean the eyes thoroughly with normal saline, followed by installation of antibiotic eye drop. We have to remember that corneoscleral button excision is not a sterile process, and we should try our best to achieve the highest level of asepsis possible. Once the eyes are clean, we move on to do a 360-degree conjunctival peritomy. After the peritomy is completed, using a number 11 blade, the loose subconjunctival tissue is pushed back to expose the bare sclera. Now this is a 16mm steel trephine. We use it to make a template mark, which is used to outline the extent of the scleral excision. This step is very important. It ensures a regular round corneoscleral button and also that the rim size is adequate. After the mark is done, a partial thickness groove is made along this mark using a number 11 blade, and finally an entry into the eye is made. Now the instruments are changed and we use a corneal scissors to cut the sclera along this groove mark. While cutting, gently lift the cut section with the forceps to avoid injury to the underlying uveal tissue. This prevents adhesion of excessive iris tissue to the corneoscleral button, and also any accidental injury to the uvea can sometimes cause bleeding. After the sclera is cut all around, the corneoscleral button is gently separated from the underlying iris. And then it is placed directly in a vial of storage media, either Macquarie-Kaufman or cortisol. A plastic scleral shell is placed over the excised part. This serves two purposes. It prevents the expulsion of the intraocular contents, and also it gives some shape to the eye and helps in cosmesis. Once both the eyes have been completed, the drapes are removed. Finally, we draw 3 to 5 ml of blood from any accessible vein. And this is transferred to vacutainer for serological tests. All the instruments and disposables are packed and taken with the technicians for proper disposal in the hospital. And finally, before leaving, we pay our respects to the departed soul, whose eyes will now help two others enjoy the world. To conclude, the corneoscleral button excision technique is not so difficult. It reduces the death to preservation time. The endothelial contact with the toxic aqueous is less. So this potentially improves the tissue quality. And most importantly, it is cosmetically more acceptable to donor family and more people donate readily.
Thank you. वीडियो के माध्यम से देखा कि ये प्रोसेस पूरा 15 मिनट्स में ओवर हो जाता है. So the donor family's time is not wasted at that crucial period. And IBank technician बनने के लिए कोई बहुत बड़ा qualification नहीं. Any higher secondary pass person who has been trained for 3 months in any EBTC, that is IBank training center, can perform this. Now बहुत questions आते हैं कि कौन donate कर सकते हैं, कौन नहीं. इसमें आई डोनेशन के लिए बहुत ही कम कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिनसे हम आई नहीं ले सकते, वो मैंने यहाँ लिस्ट किया है. दैट इज एक्टिव वायरल हेपेटाइटिस, नोन HIV, एक्टिव वायरल एंकेफेलाइटिस, क्रोइट्सफेल जेकब डिजीज एंड एनी केस ऑफ सस्पेक्टेड रेबीज. नाउ दिस कलेक्शन पैटर्न ये दो प्रकार की होती है. एक होता है वॉलंटरी कॉल और एक होता है हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम. तो वॉलंटरी कॉल वो होता है जो मतलब as the name suggests, it is voluntary, that somebody's family member has died and the next of kin wants to donate. So even if the deceased person has pledged or not pledged, the final authority for donation lies with the family members. So their consent is the only thing which is mandatory. It is irrespective of prior pledging or not. And the second type is hospital cornea retrieval program. इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा. ये इस प्रोग्राम में कुछ आई डोनेशन काउंसलर्स, कुछ टेक्नीशियंस और इवन फेलो डॉक्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. एंड ये वो जनरल हॉस्पिटल्स में पोस्टेड होते हैं एंड दे वर्क वेरी प्रोएक्टिवली एंड दे काउंसिल द डिसीज्ड पर्सन्स नेक्स्ट ऑफ किन. एंड इससे क्या होता है कि वी गेट वेरी गुड क्वालिटी टिश्यू एज द डिस्टेंस बिटवीन द जनरल हॉस्पिटल एंड द आई बैंक इज फिक्स्ड. सो वी नो दैट द टिश्यू विल बी transported very quickly to the nearest eye bank. And there is a legal tie-up between the hospital and the eye bank, and it is also a part of an organ donation program. It also helps in raising public awareness. Now, once the tissue reaches the eye bank, we can store it for 4 days in intermediate media, that is MK media. Some eye banks enjoy long-term storage method, that is organ culture, which is not available with us. But we do have other intermediate storage media like Life4C, Cornisol and Optisol, in which the cornea can be preserved for up to 14 days. And the temperature has to be maintained below 8 degrees Celsius. Now, serology tests, these 4 serology tests are mandatory before offering the tissue for transplantation, that is HIV 1 and 2, hepatitis B, it's hepatitis C and syphilis. And all the serology kits should be NACO and NABL approved. This is also mandatory that with eye banks, that is a laminar airflow hood. It is nothing but a HEPA filtered biohazard safety cabinet. तो हम टिश्यू को जब भी हैंडल करते हैं किसी और चीज के लिए, तब इस कैबिनेट के अंदर हैंडल किया जाता है. And other equipment, that is sink with running water, biomedical waste disposal unit, infectious disease control, and each piece of equipment has to have its own standard operating protocol. After the tissue is received and each tissue is labeled and all this information is put on the tissue, and each tissue gets a unique tissue ID. And each tissue then is sealed in a tamper evident seal. And this instrument is called specular microscope. This is the cornerstone of eye banking. So it counts the endothelial cells, and through that we decide whether the tissue is viable for use, and if it is so, then what purpose we can use it for. So then the tissues are graded in terms of excellent, very good, good, fair, and last is not suitable for surgery. And in that case, it is used for research and practice surgeries. Then the tissues are manually examined using the slit lamp, and each eye bank has a dedicated fridge with an external temperature monitor. Even how we keep the tissue in the fridge, there is a way of keeping. So the top part contains the ice or ice gel pack. The first rack should contain the tissues which are going for surgery, that is the surgical tissues. The second rack is for the preservative media, because we need to keep a big stock of preservative media. Third rack is quarantine tissue. Quarantine tissue, as the name suggests, the tissue which are being quarantined to look for any other pathology later on. And the fourth rack is the potentially hazardous tissue, which is going to be discarded. And this is the usual tissue flow chart in any eye bank. So once the tissue is received, we conduct the serology tests. If they are positive, the tissues are discarded. If they are negative, then they are evaluated. And then according to the grading, it is sent for its further use.
Now, apart from this, iBank has other responsibilities that like raising public awareness and coordinating between donor families and the hospitals. And we should know that all major religions, irrespective of caste and class, they support and endorse eye donation wholeheartedly. And these are our Prova iBank's collection and utilization figures from 1997. So we started with voluntary calls, and in 2004 we started with HCRP. And collection बहुत जगह पे होता है, बहुत अच्छा collection करते हैं बहुत सारे iBanks, but now we need to look at utilization rates as well, because a donor family has donated and they would definitely want their family members' eyes to be used. So currently we are maintaining almost up to 95% utilization in our iBank. So the last 2 years, because of the COVID pandemic, there has been a dip in our figures. So now that was about eye banking. I'll just quickly go through the indications of keratoplasty. So there are optical indications. Optical indications मतलब जिसके लिए जब हम vision gain के लिए ये surgery कर रहे हैं, जैसे keratoconus, corneal dystrophies, corneal scarring, pseudophakic bullous keratopathy, and corneal degeneration. And there are different types of keratoplasty. एक होता है जिसमें हम पूरा cornea transplant करते हैं अगर पूरा cornea में pathology है patient के. दूसरे होते हैं लैमेलर केराटोप्लास्टी जिसमें खाली वही लेयर चेंज किया जाता है जिसमें डिजीज है. सो लाइक डॉक्टर अवनीश सेड that nowadays we are even using one donor cornea for 2 patients. So suppose one patient is there who has an endothelial pathology, we send the endothelial cell to that patient, and if another patient who has the superficial layer pathology, we give the superficial layers to that patient from the same tissue. So then comes tectonic grafting, where the whole motive is to restore the structural integrity of the cornea. Then one of the most common indications is therapeutic keratoplasty, जहाँ पे हमारे देश में corneal ulcer बहुत common है, and जो corneal ulcers medicine से ठीक नहीं होते हैं, जिनमें perforation हो जाता है, उसमें हम ये therapeutic grafting करते हैं. And last indication is cosmetic grafting, which is very rarely done nowadays. So these are some of our success stories. These are examples of all the types of keratoplasty I described. And I would like to leave the audience with this image. ये world map है, and इसमें India का size आप देख सकते हैं कितना बड़ा surface area है. So this is the corneal blind estimate. When you compare India with the US, India is looking very big. So is Africa. And this is the current scenario of corneal blindness and the corneal transplant readiness in our country. Thank you. Thank you, sir, for your comprehensive talk encompassing both the corneal donation and its subsequent use to restore vision by keratoplasty. It's now time for a panel discussion on organ donation in India. I invite the panelists to kindly come up to the dais and take their seats. And the panelists are Dr. Avnish Kumar Seth, Dr. Aditya Bajaj, Professor Dr. Karma Lode Bhutia, Senior Ophthalmologist, STNM Hospital, Professor Dr. Aradhana Nazareth, Department of Anesthesia and in charge Critical Care, Central Referral Hospital, Dr. Sukriti Chauhan, Head of the Department of Neurosurgery in our very own Central Referral Hospital, Gangtok. She's a panelist come moderator for this session. Over to Dr. Sukriti. Good afternoon, everyone, and a very warm welcome. Right now, I don't think there is any need of introduction for the expert panelists we have right now. I, Dr. Sukriti, would like to start with a simple and easy question कि आप लोग में से कितने लोगों को ये बात पता है कि ब्रेन डेथ क्या है, यानी कि अवेयरनेस.
क्योंकि हम एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं इस डिस्कशन में कि अब हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं आप सबसे। तो मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों को ये बात पता है कि ब्रेन डेथ क्या है, कृपया अपना हाथ रेस करके हमें बताएं। आई मीन जेन्युइनली, हाउ मेनी ऑफ यू नो? ओके, सो या यू कैन कीप योर हैंड्स डाउन। सो हम नोटिस कर रहे हैं कि मतलब 10% से भी कम लोग हैं उन लोगों में जो बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, हु आर करंटली, जो बहुत लोगों को दिशा दिखाते हैं अपने अपने प्रोफेशंस में। उनमें भी बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है कि रेगुलर डेथ, नेचुरल डेथ, कंप्लीट डेथ, कार्डियक डेथ और ब्रेन डेथ में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम यहीं से अपना पैनल डिस्कशन शुरू करते हैं, वो है अवेयरनेस, कि व्हाट इज द अवेयरनेस, व्हाट इज ब्रेन डेथ। और अगले जो कुछ 10 मिनट हमको इस समय मिले हैं उसमें हम ये इन अपने पैनलिस्ट से पूछना चाहेंगे। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू क्वेश्चन आवर पैनलिस्ट। नो सर, इट इज यू डॉक्टर अवनीश सेठ, कि व्हाट इज योर टेक ऑन अवेयरनेस? अवेयरनेस क्या है इस समय हमारे देश में? अवेयरनेस कम है, लेकिन मैं कहूंगा कि जो 20 साल पहले थे उससे तो अब बहुत ज्यादा है। अब हम कई बार ऐसी फैमिली से भी मिलते हैं जो खुद अपने आप आगे आके हमें बोलते हैं कि प्लीज अब ऑर्गन डोनेशन ले सकते हैं क्या। अवेयरनेस पहले से बेटर है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना है। और जैसे मैंने अपने टॉक में कहा कि स्कूल लेवल से जब तक हम नहीं शुरू करेंगे फैमिलीज को ये समझना कि मस्तिष्क मृत्यु, ब्रेन डेथ क्या है जब हार्ट अभी बीट कर रहा है, ये काफी मुश्किल काम है। और प्रॉब्लम ये है कि 90% ट्रांसप्लांट्स हमारे प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर्स में जहां बिलिंग वगैरह इन्वॉल्व होती है, वहां पे जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो भी इसमें बीच में कई बार आ जाता है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं हम ब्रेन डेथ हैं, एक्चुअली है कि नहीं। सो द नीड ऑफ द आवर इज कि कॉमन मैन के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज्यादा से ज्यादा सब कुछ डेवलप भी किया जाए ताकि सबके लिए अवेलेबल भी हो और कॉस्ट भी कम। इन अवेयरनेस में आपको एक बात बताना चाहूंगी। एक स्टडी की थी जिसमें जैसे हम आपको बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो हम लोग एक टारगेट करते हैं कि ABCD सिखाया तो उसे 1 साल में सीख लिया। उसी तरीके से एक स्टडी की थी कि अगर हम आज से 10 लोगों को बताना शुरू करें कि ब्रेन डेथ ऐसा है और आपको अंगदान का ऑप्शन है या आपको अंगदान के बारे में नॉलेज दी, जनरल पब्लिक, एजुकेटेड पब्लिक को कम से कम मोर देन 600 डेज यानी कि 2 साल लगते हैं ये बात सहज समझने में और इस बात को एग्री करने में कि हाँ हम अंगदान के लिए रेडी हैं। सो दिस इज अबाउट अ रेगुलर स्टडी विच इज डन। तो अगर हम वही बात अपने ऊपर अप्लाई करें तो कम से कम 1-2 साल लगेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज ब्रेन डेथ? डॉक्टर आराधना, वी वुड लाइक यू टू आंसर। ब्रेन डेथ इज अ न्यूरोलॉजिकल डेथ विच इज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आम लोगों को समझाना कि क्या है। इसमें दिमाग काम करना बंद कर दे रहा है पर दिल फिर भी धड़क रहा है। एक्चुअली ब्रेन 2 भाग में बना हुआ है। उसका सबसे बड़ा भाग है कॉर्टेक्स और दूसरा है ब्रेन स्टेम। कॉर्टेक्स जिससे हम सीखना, बोलना, सीखना, पढ़ना, लिखना ये सब करते हैं, अगर उस पार्ट में इंजरी है तो पेशेंट कोमा में चला जाता है, पर कभी कभी उस कोमा से बाहर आ सकता है। पर ब्रेन स्टेम जहां चेतना का सेंटर है, ब्रीदिंग का सेंटर है, अगर वो बंद हो जाए तो कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम दोनों का मर जाने से उसे ब्रेन डेथ कहते हैं, जिसमें पेशेंट सांस नहीं ले सकता है। अगर पेशेंट सांस नहीं लेगा तो हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं जाता है और वो धड़कना बंद कर देता है, जिससे और दूसरे ऑर्गन जो बॉडी में है उसे भी ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, धीरे धीरे वो भी काम करना बंद कर देता है। पर ब्रेन डेथ पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, जिससे हम ऑक्सीजन हार्ट तक पहुंचा सकते हैं, जिससे दिल धड़कता रहता है और वो ऑक्सीजन दूसरे ऑर्गन बॉडी में मिलता रहता है और दूसरे ऑर्गन बॉडी के काम करते रहते हैं। पर ये कब तक? जब तक वो वेंटिलेटर पर है, शायद कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, उससे ज्यादा नहीं। धीरे धीरे वो भी काम करना बंद कर देगा। तो इस समय अगर हम जब पेशेंट के फैमिली को जब बताते हैं कि आपका पेशेंट का ब्रेन मर चुका है पर दिल धड़क रहा है, वो कहता है वो तो कोमा की तरह है। पर इस कोमा से पेशेंट कभी वापस नहीं आता है जब अगर ब्रेन स्टेम और पूरे ब्रेन डेड हो चुके हैं, वो इरिवर्सिबल हो जाता है। तो उस समय उन्हें लगता है नहीं,
वो तो सोया हुआ लग रहा है, पर उनको ये बताया जाता है कि वो वेंटिलेटर है जो ऑक्सीजन दे रहा है दिल को, इसलिए दिल धड़क रहा है। अगर वो बंद कर दें तो वो भी नहीं है। तो उस समय पेशेंट, yeah, we can understand कि it becomes a little very difficult for patient them and to understand. Dr. Avnish, what is your take on this? I just want to tell the audience कि हम लोग जब ब्रेन डेथ डिक्लेयर करते हैं तो डेथ सर्टिफिकेट भी भर देते हैं और हार्ट अभी बीट कर रहा होता है। जब हेड इंजरी का केस होता है तो हम लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं, उनको बोलते हैं आप हमें क्लियरेंस दीजिए, मेडिको लीगल क्लियरेंस। तो डेथ सर्टिफिकेट बिना थोड़ी मिलेगी कोई। सो डेथ सर्टिफिकेट में जो टाइम डाला जाता है, टाइम ऑफ डेथ, दैट इज द टाइम ऑफ सेकेंड सेट ऑफ टेस्ट। 2 बार टेस्ट करते हैं ब्रेन डेथ का, तो सेकेंड कंफर्मेशन का टाइम ऑफ डेथ सर्टिफिकेट भी भर देते हैं। तो पुलिस के साथ भी फिर हमें बहुत इश्यूज आते हैं। सो द अवेयरनेस लेवल इज नॉट जस्ट फॉर द हॉस्पिटल पीपल, जनरल पब्लिक, बट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस प्रोग्राम में, इंक्लूडिंग पुलिस पीपल, सभी का ही बहुत जरूरी। Yeah, so that is where we wanted to stress. Now, awareness, matlab, including the police personnel, including the students, including the traffic personnel. यहाँ तक कि ड्राइवर को भी मालूम होना चाहिए कि अगर वो ग्रीन कॉरिडोर में एम्प्लॉयड है तो क्यों है। The amount of importance कि उसको किस तरीके, वो किसकी जान बचाना चाह रहा है। Well, let's now just change over from the Angdan to cornea donation. Just now we had an excellent and beautiful talk by Dr. Bajaj. And we have 2 ophthalmologists with us. So what is आपको क्या लगता है कि current हमारी state में same eye cornea donation का awareness, and what is the next step we can take forward? Actually हम cornea donation awareness बहुत ज़्यादा है। In fact, state awareness, Doctor can help us with that idea. Yeah, thank you so much for inviting me here. So as far as awareness, I'll just start with a simple thing. So way back, 14 years back, right? So when I was a PG student, I passed out from Sawai Mansingh, Jaipur. As a first year, we had to go retrieve all this thing, all the cornea button and all. So I'll just tell that awareness was not there because we knew, because people didn't knew about this. So we used to go and do the counseling, though the counselors were there. So our consultant used to tell, and they used to say, "Ye, matlab, they had that myth was there that aankh nikal do, so that means in their another birth they'll be born without their eyes, right?" So now if you see that, now the things have really changed. Now you must have seen there in Jaipur, that's Jaipur, and I believe right now they are having a very good number of cornea retrieval. It's doing very well as far as retrieval is concerned and other organ donation. So coming back to a state also, so it's been almost 13 years since I've been practicing as an ophthalmologist. The way back, Abhika or Abhi, when I go do this national fortnight talks and all, I do get calls from people also that हम भी donate कर सकते हैं आँख and all. So that is the power of awareness, the media. So that concept has really changed, and I think this started with all the celebrities and all, when Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai, right? And as Avinash sir just said, that the media really plays a big role. Though in our state now, hopefully we'll be starting a iBank, STNM in collaboration with Manipal. So we can come up with that. But as far as awareness is concerned, now people are really aware because of all this, the medias and all. So I think we have got a good future, right? Any questions from the audience on this? So I think the audience has either understood too much or, oh yes, madam is there. Madam wants to know that to whom the eye has gone, or is it really used? That kind of knowledge will the donor have? Yes, the donor family is notified immediately as soon as the eye is transplanted, but we can never divulge any information to whom it has gone. And like Dr. Karma said, one particular dialogue, that people have a thought process that in the next gen they might be born without that. Now there is also this concept of daan ingrained very much in every religion, every human being, that whatever you do, you get back more. So they say you donate money, God gives you more money. You donate food, God gives you more food. So why does this go wrong with the organs? Instead, you should think that
if you donate your organs, probably if you believe in the next Janma, then obviously you should be born with a better quality of that same organ. Why not think that way? It's just the thought process that needs to change when we discuss such topics. Dr. Gandhi has a question. One second, Dr. Avnish. Kindly cut this short. We have a really short time. Yeah. So सवाल ये है कि ब्रेन डेथ डिक्लेयर कैसे करते हैं? 4 डॉक्टर्स मिलके पेशेंट को टेस्ट करते हैं. उसके कुछ टेस्ट हैं जो हमारे ट्रांसप्लांटेशन एक्ट में लिखे हुए हैं. उनको करने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है. पेशेंट को कहीं आईसीयू से शिफ्ट नहीं करना पड़ता सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी या किसी टेस्ट के लिए. एक बार जब हम कन्विंस हो जाते हैं कि ये ब्रेन डेथ है, 6 घंटे के बाद वही 4 डॉक्टर फिर से मिलते हैं और ये टेस्ट दोबारा किए जाते हैं. ये इंसिडेंटली ये खाली हमारे देश में ही ऐसा है, बाकी देशों में कोई ऐसा मैंडेटरी 6 घंटे का टाइम नहीं है. कहीं 5 मिनट है, कहीं बिल्कुल टाइम नहीं है, कहीं 15 मिनट है. सो 6 घंटे हमारे गवर्नमेंट ने काफी लंबा टाइम दिया है, तो उससे फैमिलीज और ज्यादा कन्विंस हो जाती हैं. सो देयर इज नो मेजर एक्सपेंसिव टेस्ट इन्वॉल्व, दे आर जस्ट बेड साइड क्लिनिकल टेस्ट. और जैसा मैडम ने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ब्रेन डेथ इज डेथ. ब्रेन डेथ से वापस कोई नहीं आता जिंदगी में. और एक ही डिफरेंस है बिटवीन ब्रेन डेथ एंड दैट इज अ बीटिंग हार्ट, और वो भी रुक जाएगा थोड़ी देर में. Thank you so much, panelists. It was an excellent discussion. I think if we start talking, we can go on talking for hours, but let's proceed with the rest of the program. Thank you so much. I request all the panelists to be seated here for some time. I request panelists to please be seated. Thank you, esteemed panelists and Dr. Sukriti, for the much needed overview regarding organ donation. I now request Honorable Vice Chancellor, Sir, Sikkim Manipal University, Registrar, Sikkim Manipal University, Dean, Sikkim Manipal Institute of Medical Sciences, and Director, Sikkim Manipal Institute of Technology, to kindly felicitate the panelists. Thank you, everyone. After this enlightening session, we present to you a group dance by faculty of Sikkim Manipal College of Nursing, Sikkim Manipal University.
चुनी काट्छु भन्थ्यौ नि मसितै मनको साइनो जोडी छौ कोसितै चुनी काट्छु भन्थ्यौ नि मसितै मनको साइनो जोडी छौ कोसितै पहिले माया मोहनी लगाउने अहिले भेटो भन्दा लिन आउने पहिले माया मोहनी लगाउने अहिले भेटो भन्दा लिन आउने जो बदलाल है क्यों ही आया इकरार है बातें हमें जिंदगी क्यों ना करे बातें हमें सफर जाने किसका है हमें इंतजार किसी जिंदगी नहीं है और कहीं तक सितारे पागल है मैं तू बरस रही है खुशी हर कहीं रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे मोह मारे नजरिया सावरिया रे मोह मारे नजरिया सावरिया रे पहली नजर में ही मैं faculties from Sikkim Manipal College of Nursing for this lovely performance. Now, I would like to call upon Dr. Polly Lama, Associate Professor, Department of Anatomy, Sikkim Manipal Institute of Medical Sciences, to deliver her talk on Body Donation Insight. Dr. Polly Lama. Very warm good afternoon to everyone, and a grand welcome to the dignitaries and the eminent panel of experts that we have with us here today.
And today I'm going to be talking about body donation. And I must say I'm lucky to start this presentation today by expressing my deepest gratitude on behalf of Sikkim Manipal Institute of Medical Sciences and Sikkim Manipal University towards the government of Sikkim for enacting the Sikkim Anatomy Act. Now, to talk about the Sikkim Anatomy Act briefly, it was passed by the Sikkim Legislative Assembly upon the assent of the governor on the 18th of November 2014. What this act does, it regulates and it allows us to use donated dead bodies for anatomical education, research, surgical training relating to human health. Now, you must be wondering, so how is body donation helpful after death? In order to explain that, here are some points that I'd like to throw some light on. Body donation is also called as Deadan. It is the use of whole body after death for the purpose of medical education and research relating to human health. Body donation is important and helpful for our medical students and researchers as it enables them to visualize and learn about the internal features and functioning of the human body. Here, I would like to stress on point number 3 that books, mannequin, virtual 3D anatomical teaching tool cannot replace conducive, practical, hands-on learning imparted through the process of dissection of cadaver, which is also called as opening of the dead bodies. So what's the necessity behind body donation? And I'm going to be very honest over here. Department of Anatomy, SIMS requires 10 to 15 bodies, cadavers per year for the purpose of dissection, demonstration, examination, preparation of museum specimen, solely for the purpose of teaching undergraduate, postgraduate, medical, allied health, and paramedical diploma students. Bodies, cadavers are also used by PhD students for research activities. Now, what is the significance behind all of this of body donation, especially dead body donation, is that first and foremost, it is done after death. That means after the declaration of even brain death, that is, and it is without any expectation from a dying person, from their friends and families, and the society awareness program like this, government initiative like this plays a very, very valuable role in disseminating the information on body donation. Body donation is considered to be a noblest of the noble act where donors have been considered to render useful service to the society even after death. Medical education and learning is imperfect without the dissection of dead bodies. Now you must be wondering, what is the procedure for donation in Sikkim? There are few simple steps that I'm going to talk about step by step. But before I take you through the steps, there are some few important points that I would like to enlighten you about. And that is, voluntary body donation can be done only in a medical institution. Please note that it can only be done in a medical institution. Body should be donated within 24 hours after death. Eye donation, organ donation should be done prior to the body donation, which has been opted by the donating individual. Now here also, I would like to stress on one more fact that the body, which is going to be transported to Sikkim Manipal Institute of Medical Sciences, the charges is completely incurred by the institution. So the steps are, it involves filling up a simple form, which is called as form number 1, self-donation form. The name itself is self-explanatory. This is a point we are donating your body yourself. So self-donation form has to be filled in with one passport size photo, but two mandatory things are signature of 2 close relatives as witnesses, along with contact details of the next of the kin. Form number 1 is available in English language in our websites. Nepali and Hindi language will soon be available, and it can be translated into any other language upon a reasonable request. Form number 1 is present in Sikkim Manipal Institute of Medical Sciences website, as well as Sikkim Manipal University website. The next step is form number 2, which is completely different than form number 1. Now here, the donating individual may not have had that opportunity or time to fill up form number 1. So in this case, what is done? The next of the kin, the family members, all the relatives is going to authorize the donation process. Form number 2 is also available in English language in our website, and it can be converted into any other language upon a reasonable request.
So what happens if the body is unidentified? Okay, especially for police personnel, Sikkim Anatomy Act allows acceptance of unidentified body under following circumstances. If the death occurs at public place and no one claims or identifies the body, medical cause of death has been issued as natural causes by the doctor, the investigating police officer, and the executive magistrate. Investigating police officer then may have to make an appointment to the registrar or the dean's SIMS office for the process of acceptance of the body. Here, an important point is the body shouldn't be decomposed and it should not have crossed the 48-hour timeline. So therefore, this brings me to the criteria for acceptance and the criteria for rejections of the donated body. So acceptance are fairly simple: death due to natural causes, fully filled form number 1 and form number 2, and of course a death certificate. And the criteria for rejection are decomposed body, mutilated bodies, death from contagious diseases such as AIDS and COVID, death due to unnatural causes such as poisoning, accident, and suicide. There are actually more number of reasons which are the criteria for rejection. I am cut short with time today, so I'll not have the opportunity to talk about in length and breadth. But if you are interested, please do visit our website to find more about the criteria for rejection of the dead bodies. Now, what happens to the body after we receive it? Here is a small figure of an infant embalming process, and that is what we exactly do with the adult body too. We embalm the bodies by injecting formalin to prevent it from further decaying. Thereafter, these donated bodies are preserved in tanks, and they are thereafter used only for academic study purposes. So the religious and cultural view among the Sikkimese people concerning body donation is extremely positive. All religion in Sikkim approve of body donation as a charitable act, and report is an individual decision. No religious body or organization condemn collection of human bodies for the purpose of teaching and research following the Sikkim Anatomy Act of 2040. And in conclusion, I would like to stress by saying that body donation means generosity to human mankind. Donated body, it makes a difference to medical education, and the names of the donating individual are forever immortalized in the Department of Anatomy at Sikkim Manipal Institute of Medical Sciences via Thanksgiving program. Donated bodies are treated with the same honor and respect as the living soul, for it is the donated bodies that are teaching the future medical practitioner of our country. And if you are thinking about body donation, please do not hesitate to contact Dr. Vinod Kumar Thamang, who is the head of the Department of Anatomy. His details are on the screen as well as in our website. And I'll leave you with this figure of a dissected body. The skin is completely removed, which was exhibited in Dublin, Ireland. So with that, I would like to thank you for your time today. And I hope you have a good afternoon. Thank you so much. Thank you, ma'am. May I now request Dean SMIMS, Dr. Muralidhar V. Pai, to kindly come up to the dais and felicitate Dr. Polly Lama. अब मैं अति सम्माननीय महामहिम राज्यपाल एवं सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री गंगा प्रसाद जी से श्रद्धा पूर्वक निवेदन करती हूँ कि वे मंच में पधारें और आज के इस कार्यक्रम के द्वारा हम सभी को अंगदान जैसे पावन कर्म में भागीदार होने तथा अंगदान के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त एवं प्रेरित करें।
सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में आयोजित भारत में अंगदान के एवं सिक्किम के लिए आगे का मार्ग इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित सिक्किम सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मणि कुमार शर्मा जी, क्षेत्रीय विधायक श्री जेटी डुगेल जी, कैबिनेट सचिव श्री जेपी उपाध्याय जी, स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर कम सेक्रेटरी श्री डी आनंद जी, मणिपाल मोस्ट के प्रमुख डॉक्टर अविनाश सेठ जी और सिलीगुड़ी से आए हुए डॉक्टर आदित्य बजाज जी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राजन एस ग्रेवाल जी, सिक्किम मणिपाल मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मुरलीधर जी, मणिपाल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर योगेश वर्मा जी और सभी डॉक्टरगण, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के कई विभागों के अध्यक्ष, मीडिया के मित्रों, सभी छात्र छात्राएं, देवियों सज्जनों, आप सभी को आज इस अवसर पर जो आज अंगदान के संबंध में काफी चर्चाएं, विस्तृत रूप से चर्चाएं हुई और जिसमें डॉक्टर अविनाश सेठ जी ने बड़ा विस्तृत रूप से और विस्तार से उन्होंने बताया सचमुच इसकी क्या आवश्यकता है, इस चीज को आज महसूस करने की आवश्यकता है। आज इस समारोह में कोई परंपरागत समारोह नहीं बल्कि संवेदनाओं से भरा, मन की गहराई को छूने लेने वाली, हमारी आत्मा को झकझोरने वाला कार्यक्रम है। मुझे आज इस आप सबों के सामने अंगदान, अंग प्रत्यारोपण आदि अति महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने से अति प्रसन्नता हो रही है। आज से लगभग 2 वर्ष से और अधिक है उस समय से यह चर्चा चल रही है, लेकिन कोरोना के कारण यह जो स्थगित हो गया था, इसके पहले जो वाइस चांसलर वीसी महोदय वेंकटेश जी थे, उस समय भी हुआ कि जल्द ही इसे प्रारंभ किया जाए और कई लोगों से इसकी चर्चा मैंने किया, बाजार के लोगों से भी, आम जनता से भी, महसूस सभी लोग करते हैं कि इसकी आवश्यकता है, लेकिन है कि वो माने जो प्रारंभ होना चाहिए। देखिए आज इसकी आवश्यकता है कि जन आंदोलन के रूप लिया जाए, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार यह पता चला कि लगभग 85 से 90% लोग हैं जिन्हें कि इसके बारे में जानकारी है ही नहीं कि अंगदान भी होता है और अंगदान भी जरूरतमंद लोगों के लाभदायक होता है, उन्हें भी आज ऐसी पता नहीं है। अभी एक कार्यक्रम दिल्ली में और दिल्ली में जो दधीची देहदान समिति, यह जो है इस कार्यक्रम के दिल्ली में 2 दिन का कार्यक्रम था। प्रथम दिन स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसका प्रारंभ किया था, दूसरे दिन उपराष्ट्रपति महोदय इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो आलोक कुमार जी जो इसको शुरुआत की है, और यह दधीची देहदान इसलिए नाम रखा गया कि यह है कि प्रथम भारत का दधीची है जिन्होंने पूरा अंगदान किया था। वैसे कहा तो जाता है, अलग है कि वो देवासुर और देवताओं इनके बीच में झगड़ा था और लोगों ने कहा कि किसी संत का हड्डी जो है उससे बनेगा, सिर्फ उसी से इस असुर लोगों का नाश होगा, इस तरह से। और इन्होंने दधीची ने अपने अंग को उसी प्रकार अपना बैठ गए और इसको गला करके किस तरह से उन्होंने दान किया था, तो इसलिए वो नाम रखा। और नानाजी देशमुख सबसे पहले उन्होंने बहुत पहले अपने जीवन की घोषणा कर दिया था, मैं पूरे शरीर का दान करूंगा, और साथ ही साथ 11,000 रुपया भी हॉस्पिटल को, एम्स को उन्होंने रखा, दे दिया था कि हमारे बॉडी को लाने में जो खर्च हो, तो इसके लिए किस प्रकार यह कार्य मने चला। आज देखिए कई चीज, अभी तो जैसे बिहार में एक कार्य चल रहा है और बिहार में
से ऊपर लोगों ने अपना वसीयत फॉर्म एक फॉर्म चाहे जिस फॉर्म सारी चीजें हैं उनका, और बाद में ये सारी बातों देखें इस तरह से हैं और अभियान चलाते हैं, जगह जगह पर बैठक कर करके शनिवार रविवार को बैठक करके गांव में या दूर दराज में शहर में जहां बैठक का आयोजन करके लोगों में जागृति लाने में इस प्रकार का कार्य करते हैं। का लगभग अभी तक 1000 के आसपास लोगों ने कॉर्निया दान कर चुके हैं। एक उससे कितने लोगों को अभी तक लाभान्वित हो चुके, और इसी प्रकार 8 लोगों ने शरीर दान किया। ये अभियान एक मने वहां चल रहा है और इस प्रकार यह प्रयास किया जा रहा है कि लोग इससे काफी मने जुड़े, और जुड़ करके देखिए कई लोगों का तो फोन आता है, और फोन कई ऐसे लोग हैं जब उनसे बात करते हैं कि भाई ये ठीक है आप तो ये मने कर रहे हैं, लेकिन उस समय वाले परिवार के लोग कोई विरोध कर दें, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरी चीज है, जैसे हम लोगों ने कहा ना घोषणा की है, अब परिवार की मानसिकता बनी हुई है, हमारा बेटा भी है विधायक और वह भी इससे जुड़ा हुआ है, तो मानसिकता बनी हुई है, क्योंकि वो जो घड़ी रहता है उस समय एक दुख की घड़ी रहता है, और उस समय जैसा कि ठीक ही डॉक्टर सेठ जी ने यह ठीक ही कहा कि यह तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तो नहीं है कि हाँ आपके दादाजी ने पिताजी ने वसीयत किया था इसलिए हम आ गए हैं हम आपको ये लेने के लिए, ये तो आप कर नहीं सकते हैं, ये तो उनकी इच्छा का, जब तक कि उनकी इच्छा न हो तो इसलिए जरूरी है कि उनकी मानसिकता, और ये हमेशा कहते हैं कि जिन लोगों ने वसीयत किया है वो अपने परिवार के लोगों की मानसिकता बना के रखें, उनके दिमाग में बैठना चाहिए, जैसे कि वसीयत होता है, लोगों ने वसीयत करते हैं कि भाई हमारी इच्छा है कि हम हमारे जिंदगी में बन गया नहीं तो हमारे पोता एक मंदिर बना देगा, ये हमारे और परिवार के लोग एक धर्मशाला बनाएंगे, तो लोग आता है कि हमारे दादाजी ने वसीयत किया था, हमारे पिताजी ने वसीयत किया था, इसलिए हमें बनाना है। तो उसी प्रकार यह लोगों के दिमाग में रहे कि हमारे पिताजी हमारे दादाजी ने वसीयत किया है कि हमें नेत्र दान देना है, हमारे अंग दान देना है, हमें शरीर दान देना है, इसलिए ये हमारी इच्छा है। तो बता रहा हूँ एक व्यक्ति लगभग मैं समझता हूँ कि हर महीने नहीं तो 2-3 महीना पर फोन करते थे कि देखो भाई जैसे हो, मैंने हमारा शरीर जो है पूरा अंग दान, पूरा शरीर का दान मैं करने के लिए होना चाहिए, और बाद में पता लगा उनकी मृत्यु हुई, उनके बेटा और बेटी दोनों में झंझट हो गया, एक ने कहा कि नहीं मैंने ऐसा पिताजी कहे, एक ने कहा नहीं मैं नहीं जान दूंगा, आखिर उनका शरीर वो मैंने दान नहीं हो सका। तो यह जो है कि एक वसीयत इस रूप में होना चाहिए, और ये सबसे बड़ी चीज है कि लोगों के दिलो दिमाग में बैठा है। हम लोग यही कहते हैं कि जिंदा माने जिंदगी में रक्तदान और मृत्यु के बाद नेत्रदान या अंगदान, क्योंकि यह जो है एक दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे अब नेत्रदान जरा कल्पना कर लीजिए कि जिसको आंख लग गया, जिसने दुनिया को देखा, क्या उसकी अनुभूति होते हुए कितनी प्रसन्नता होती होगी, जिसने मैंने देख नहीं पाया था कैसे दुनिया है, कैसे हमारे माता पिता हैं, कैसे और लोग हैं, सारा चीज मैंने देख लेते हैं। इसलिए कहते हैं हम लोग कि दूसरी पारी आपको खेलना है तो इसलिए आप नेत्रदान अंगदान करें, या मानकर चले कि मैं स्वयं देख रहा हूं। तो इस चीज है, ये सब है कि लोगों में जागृति लाना, लोगों को बताना अब किडनी है लग गया, अब जरूरतमंद लोग जो मृत्यु सैया पर पड़े हैं और फिर से वो आकर के मैंने फिर से वो उनका जीवन मैंने एक जीवन दान एक तरह से मिल जाता है, और इस प्रकार करते हैं तो क्या उनको अनुभूति होती है और किस प्रकार प्रसन्नता। तो ऐसी कई एक घटनाएं तो आए कि एक महिला जो जिसका कि परसों होना था, उसका परसों हुआ और मगर उसकी मृत्यु हो गई, पर उसका जो बच्चा था वो मैंने चुप होता ही नहीं था, और उसी समय एक जरूरत था एक हार्ट का, एक दूसरे महिला के ऊपर लगाया गया, और बाद में पता चला कि 2 दिन तक तो बच्चा रोता रहा, मगर बाद में वो जो महिला जिसको उसका हार्ट लगा था और वो गोद में ली तो बच्चा चुप हो गया। उससे तो इस तरह से मैंने तो ऐसी कई सी घटनाएं घट रही है। अब तो लोग उस ओर मैंने ध्यान दे रहे हैं, जा रहे हैं,
लेकिन यह है कि इसका कहने कि जन आंदोलन के रूप में यह प्रचार प्रसार होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि जगह जगह बैठक करके और लोगों को तैयार करें, लोग ये अभियान चलाएं, अभियान चला करके लोगों के दिल में दिलो दिमाग में यह बैठाएं कि यह कार्य किया जाए। और इसमें 2-3 चीज, एक तो है कि सबसे पहले अब कम से कम आई बैंक, अब यहाँ पर आई बैंक मैंने निश्चित रूप से सबसे पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि जब उसके तैयार हो तो ये सबसे जरूरी है। उसी प्रकार जो भी है उसकी व्यवस्था जो है यह होनी चाहिए। जैसे हो गया है कि मैंने बिहार के अंदर में एक लगा कि जहां जहां यह सरकार के द्वारा हॉस्पिटल ये चल रहा है उन सभी जगहों पर आई बैंक की तो स्थापना किया ही जाएगा। कई जगहों पर हो चुका है, वहाँ इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान, वहाँ पर कई कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार के ऐसे अभियान मैंने कहा कि वहाँ अभियान हम लोग बहुत तेजी से मैंने चलाते हैं और ये प्रयास करते हैं कि हर महीना 2 महीना में, कभी कभी महीने में 2-2 बैठ के उन लोग बीच में हो जाए। इस तरह करीब करीब लगभग बिहार के सभी जिला में बैठक हो चुकी है और वहाँ लोग कमेटी बन चुकी है और इस प्रकार लोगों को माने जागरूक करने का, लोगों के दिलो दिमाग में बैठाने का कि भाई आप के मरने के बाद यह तो शरीर का आपने जला दिया, शरीर को गाड़ दिया, उसका कोई कीमत नहीं, बिल्कुल वो भस्म होकर के बर्बाद हो गया। और यदि आपका अंग जरूरतमंद व्यक्ति के रूप में उसको प्रत्यारोपण हो गया और वो फिर से एक नई जिंदगी पा लेता है, तो कल्पना कीजिए कि देख कर चलिए कि हम दूसरी पारी खेल रहे हैं, हम स्वयं उसमें हेल करके मैं स्वयं उस रूप में कार्य कर रहा हूं। तो यह भावना लोगों के अंदर में जागृत करना और इसके लिए है कि जन आंदोलन इस रूप में किया जाए। तो बताएं कि वो जो 2 दिन बैठक दिल्ली में थी, यह 3 और 4 अगस्त को, तो ये 3-4 सितंबर को, तो उसमें काफी पूरे भारत में जहां जहां ये अभियान चल रहा है उसमें अधिकतर कई जगहों से पूरे भारत से लोग वहां पहुंचे हुए थे। और वहीं पर मैंने घोषणा भी किया था कि सिक्किम के अंदर भी मैंने 7 तारीख को यह कार्यक्रम करने जा रहा हूं, जिसमें कि सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया गया है और जो कार्यक्रम करके वहां भी यह अभियान तेजी से चलाया जाएगा, लोगों में जागृति लाने के कार्य किया जाएगा। ये चीज है। इसी प्रकार अब कई चीजें लोगों के बीच बांटते हैं कि हमारे अब जो है कि क्या क्या चीज दान करना है, ये तो विस्तृत रूप से डॉक्टर साहब ने बतला दिया क्या करना है, कि कितना समय में कौन सा दान करना है, इसलिए वो उसकी चर्चा न करते हुए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं कि इस अभियान को तेजी से चलाया जाए और सिक्किम के अंदर यह कार्य प्रारंभ हो जाए और इस प्रकार लोग स्वयं अपनी इच्छा से इसके लिए तैयार हो जाएं। जैसा कि श्रीलंका के संबंध में यह कहा जाता है कि वहां कोई अंधा नहीं है, वहां पर एक चलन हो गया कि सभी लोग आंख डोनेट करने का एक चलन हो गया है। तो इसी प्रकार का एक चलन हो और जैसा कि डॉक्टर साहब ने इस बात को कहा भी कि निश्चित रूप से वो दिन आएगा कि भारत सबसे आगे इस माने में रहेगा, क्योंकि भारत की परंपरा रहा है दान देने का, यह परंपरा रहा है त्याग, तपस्या और बलिदान, ये भावना भारतीयों के अंदर में रहा है। दूसरे की सेवा करने का, सेवा की भावना भारतीय के अंदर है। इस प्रकार का है कि हम अपना और भी चीज दान कर करके और किसी प्रकार हर चीज है दान करके लोगों ने पहले आप जितना उठाए, जितना आप देख ले कॉलेज वगैरह बना, सब लोगों के दान से ही बना है। तो इस प्रकार दान करने की प्रवृत्ति रही है। तो इस प्रकार ये कार्य को आगे बढ़ाया जाए और सचमुच में बड़ा ही ये अच्छा कार्य, इस कार्य को चलाया जाए। और अभी तो चल रहा है अपना अमृत महोत्सव, जिस अमृत महोत्सव के अंदर आज यह याद किया जा रहा है उन लोगों को, उन शहीदों को जिसने देश को आजाद कराने में हंसते हंसते में प्राण की आहुति दी। एक नहीं लाखों ने अपनी आहुति दी है, तब कहीं देश आजाद हुआ है। तो उनके यादगार में कि उनके दिलों में क्या कल्पना थी, उनके दिलों में कल्पना थी देश हमारा आजाद होगा, देश खुशहाल होगा और ये देश फिर से अपनी प्राचीन गौरव गरिमा को प्राप्त करेगा। ये भावना से लोगों ने माने कार्य किया था। तो उनको याद करते हुए और फिर हमें उसके लिए माने लोगों में जागृति लाना, लोगों को बताना है। और साथ ही साथ अभी चल रही, अभी चला भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 25 वर्ष के बाद जब हम 100वां वर्ष मनाएंगे आजादी का, तो उस समय हमारा देश कैसा होगा
उसकी तैयारी करना है कि देश फिर से संसार का गुरु बने, फिर से यह देश अपने प्राचीन गौरव गरिमा को प्राप्त करे, इस प्रकार कार्य किया जाए। तो इस विचार को लेकर के आज तैयारी चल रहा है और खास करके यह कहा जाता है कि यह नौजवानों का देश है। तो ये नई पीढ़ी के लोग जिनका आज उम्र है आज 25-30 वर्ष है, उस समय 25 वर्ष के बाद जब वो 55 वर्ष 60 वर्ष के होंगे तो उस समय तक आएगा कि साहब उस समय से हम तैयारी करके आज इस रूप में देश है आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर छात्र छात्राएं जो भी हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आप कई लोग बहुत दूर दराज से भी आए हुए हैं। आप जरा सोच लीजिए, आपके माता पिता अपनी गाढ़ी कमाई में से जो कमाते हैं, जो वो अर्न करते हैं, उसमें से बचा करके आप पर खर्च कर रहे हैं। उनके दिल में क्या तमन्ना है, किस भावना से वो खर्च कर रहे हैं। ये नहीं है कि कल को आप उनको उनकी सेवा करेंगे न करेंगे, इसकी चिंता नहीं। चिंता है कि हमारा बेटा बेटी एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा इस रूप से एक बने अच्छा व्यक्ति बने और इस प्रकार अच्छा बने बन सके, इसके लिए वो लोग अपना इस प्रकार माने करके उस पर लगा रहे हैं। तो इसलिए आपको सोचना है 2-3 चीज। एक तो आपको अपने जीवन के बारे में सोचना कि हमारा अपना जीवन को सफल बनाना है, माता पिता की आकांक्षाओं की पूर्ति करना है। शिक्षक लोग इस भावना से पढ़ा रहे हैं, उनके दिल में तमन्ना है। और सबसे बड़ी चीज भारत माता, जिसके अंदर एक है भावना कि हमारे नौजवान नई पीढ़ी के लोग किस प्रकार आगे बढ़ करके और भारत को आगे बढ़ाएंगे, भारत का विकास करेंगे। यह एक सोच सबके अंदर सोच होना चाहिए। अभी जो तिरंगा यात्रा जो निकाला गया, इसके पीछे क्या था? लोगों में एक जागृति लाना था राष्ट्र के प्रति। यह देश हमारा है, देश के लिए हमें बहुत कुछ करना है, इस भावना के साथ कि यह देश हमें बहुत कुछ देता है, हम भी कुछ देना सीखे, इस भावना से कार्य करना है। इसलिए आप सबों से, खास करके सभी छात्र छात्राओं से ये कहता हूं कि आपको बहुत कुछ करना है जीवन में, अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने माता पिता की आकांक्षाओं के लिए आपको बहुत कुछ करना है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखेंगे, समय किसी के लिए रुका नहीं है, अपनी गति से समय चल रहा है, दिन चल रहा है। जिसने समय के साथ अपने आप को जोड़ा वही आगे बढ़ता है। कोई आसमान से टपकता नहीं, IAS IPS वगैरह बनता है कि आसमान से नहीं टपकता है, बल्कि जिन लोगों ने समय के साथ जोड़ करके समय का सदुपयोग किया वही आगे बढ़ता है, वही जीवन में सफल होता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बहुत कुछ कार्य करना है। इस प्रकार साथ ही साथ शिक्षक लोग हैं, उन्हें भी इस रूप में कार्य करना है कि ताकि यह विद्यार्थी जिस समय कॉलेज से निकले उस समय कुछ बनकर के निकले, उनके दिल में तमन्ना हो, कुछ करने की तमन्ना हो, वो कुछ नई चीज। आज तो देखिए नई चीज खोज हो रही है, आज विज्ञान बहुत तेज से आगे बढ़ रहा है, तो नई नई चीजें की खोज हो रही है जी। तो इस प्रकार आप लोगों को कुछ इस रूप में कार्य करना है, कोई नई चीज को आप खोज करें, खोज करके इस तरह के लाने की जो भारत के लिए उपलब्धि हो, तो इसके लिए सबको मिलकर कार्य करना है। ताकि इस अवसर पर जो अपना यह जो चला नेत्रदान और अंगदान संबंध में काफी विस्तार रूप से अपने यहाँ पर डॉक्टर साहब इन लोगों ने रखे और इस विचार से वाइस चांसलर महोदय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो एक अभियान आज प्रारंभ हुआ है और इसका आज तेजी से यह जो है हर पूरे सिक्किम के अंदर में यह एक विचार फैलाया जाएगा लोगों के अंदर, और लोगों से एक फॉर्म उस रूप में फॉर्म भरवाना, उनके बीच में बैठक करना, उनको एक जागृत करना, और साथ ही साथ आई बैंक की तो स्थापना सबसे पहले हो जाना चाहिए। ये हो जाए, इसके लिए भी आज मैं समझता हूं कि जल्द ही इसका मैंने ये कार्य होगा और ये किया जाएगा। इस रूप से यह कार्य किया जाए और इस प्रकार कार्य करते हुए यह एक अभियान जो है चलाया जाए और निश्चित रूप से जरूरतमंद लोग इससे लाभान्वित हों, और इस चीज को लोगों के बीच में रखना, या लोगों के दिल में ये एक भावना भर देना कि भाई ये तो शरीर मृत्यु के बाद जल जाएगा और जलने के बाद खाक में मिल जाएगा, और यदि जरूरतमंद लोगों को आपका अंग का लाभ मिलता है तो यह कल्पना कीजिए, यह मानकर चलिए कि महापुण्य का काम है। पुण्य के लिए आप तीर्थ यात्रा करते हैं, कई ऐसा कार्य करते हैं, यह महापुण्य का कार्य है। इसलिए
इस अभियान को चलाते हुए लोगों की भावना भरिए कि पुण्य का काम कीजिए। जिंदगी भर तो आप अपने शरीर के द्वारा कई ऐसे काम किया, धन उपार्जन किया और भी कई ऐसा कार्य किया, बच्चों का पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया सब किया, लेकिन मरने के बाद आपका शरीर जो है जरूरतमंद लोगों के लिए लाभदायक होता है, उनके लिए माने यह जरूरत उनके लिए लाभदायक होता है। यह जरा कल्पना कीजिए, ये महापुण्य का कार्य है। तो इस अभियान में आप लोग जुड़िए और इस प्रकार का यह जो अभियान जो है सो तेजी से चलाया जाए। निश्चित रूप से इसके पीछे लोग काफी आकर्षित होंगे और इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग तैयार होते चले जाएंगे। इस अभियान को तेज चलाया जाए और यह अभियान जो है आज प्रारंभ जो किया गया है, मैं समझता हूं क्या सिक्किम वासियों के लिए काफी लाभदायक और महापुण्य का यह कार्य होगा और इसमें लोगों के अंदर जागृति आएगी और जागृति का अभियान शुरुआत किया जाए और सभी लोग मिलकर के इस अभियान को चलाएं। जो भी बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं वो सब इस प्रकार लोगों को बैठक रखिए, बैठक में जहाँ 10-20 इकट्ठा हो, 25-50 इकट्ठा हो, उनके बीच में जाइए, उनको समझाने का प्रयास कीजिए। तो एक अभियान चलना चाहिए और इस अभियान को चलाना खास करके बुद्धिजीवी वर्गों को, डॉक्टर लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, जो उन लोगों का बहुत बड़ा दायित्व है और इसको चलाया किया जाए तो निश्चित रूप से सिक्किम के लिए लाभदायक हो। तो आज इस अवसर पर यह जो प्रारंभ किया गया इसके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि अभियान तेजी से सिक्किम के अंदर चलेगा और चलते हुए जरूरतमंद लोग इससे लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय सिक्किम। धन्यवाद आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी। आपने अपने प्रबुद्ध वक्तव्य से ही नहीं बल्कि अपने खुद के उदाहरण से हम सबको सेवा भाव का राह दिखा के कृतार्थ किया। May I now request Dean, Sikkim Manipal Institute of Medical Sciences, Dr. Murlidhar V. Pai, to propose the vote of thanks. Respected dignitaries, I deem it my privilege and honor to propose the vote of thanks. First of all, I would like to express our deep sense of gratitude towards our Honorable Governor, His Highness, Sri Ganga Prasad ji, for taking time out despite his scheduled and unscheduled programs today. He has come here. In fact, this program was driven by him and he's been so passionate about it. And we are happy that we could hold this program today, sir. And we promise to take this ahead and we'll make sure that this awareness spreads all over Sikkim and India will become the first donor in the world. I would like to also extend a heartfelt hearty welcome and hearty thanks to Avnish Seth, who has come all Delhi, and Dr. Raj, who has come from Silicon, and Karma, who has come from TNM. Thank you very much. Sense of gratitude that today Adhyay Cabinet Secretary Sri D. Anandan, who is Commissioner and Secretary Health and Chief Election Officer, and Sri J.S. Dhama, who have graced this function.
our local MLA, Sri GT Dhongyal, has always been a big support to SMIMS as well as SMU. Thank you very much for coming. I also would like to thank Dr. CM Sharma, Additional MS, STNM, and Dr. Rajan S. Grewal, Dr. GL Sharma, Director SMIT, Dr. Yogesh Verma, MS, and all the HOIs, HOUs, heads of the departments, faculty, student for coming and gracing this program and taking the benefit of this program. Thank you, one and all. Thank you, sir. May I now call upon Honorable Governor of Sikkim, Sri Ganga Prasad, Health Minister Dr. Mani Kumar Sharma, our guests, and all the dignitaries and participants to kindly come on stage for a official group photograph. I would now like to request all present here to kindly rise up for the national anthem. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. You may kindly take your seat now. With this, we come to the end of today's program. I, Dr. Ruby Day, and I, Dr. Bhavna Thapa, your host for this event, thank you all for your gracious presence in today's program. Namaste and Tashi Delik.